प्रियंका मैम, प्रियंका मैम आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ जी सर। आ रही है, आपकी आवाज आ रही है जी। Good evening to all. When shall we start, sir? Yes ma'am, please proceed. Start कर दूं? Yes ma'am. ठीक है। There is an announcement for all of you. Before we start, you can connect with us on YouTube and FB also, Facebook also. So we are going to start. Sir, Saurabh sir, आ गए? Yes, madam, please carry on. Knowledge is a power. Knowledge is everlasting. Knowledge is an investment. And when this knowledge applied with proper skills, timing, and foresightedness, it will give us return in the form of successful entrepreneur, successful industrialist, successful professional, and obviously a successful trainer. With this, I welcome Chairman RFI, respected Dr. Saurabh Jain sir, Vice President RFI, respected Dr. Ashok Kumar Gupta sir, President North South Zone RFI, respected Priyadarshini Agnihotri ma'am, Central India Board President RFI, Professor Ajay Jain sir, Vice President Central Board of India RFI, Dr. Sangeeta Bharuka ma'am, President MP State RFI, Dr. Manish Dubey sir, Joint Secretary Central India Board, Dr. Subrato De sir, MP State Coordinator, Dr. Sanjay Prasad sir, MP State Joint Secretary, Dr. Sarita Rana ma'am, World Virtual Conference Forum President, Dr. Prakashni Tiwari ma'am, Indore Zone President, Dr. Indra Dikshit ma'am, Indore Chapter Head, Professor Kuldeep Agnihotri sir, Central India Board Officer Representative Ms. Priyanshi Dubey ma'am, Technical Expert Mr. Yograj ji, all State President, Chapter Heads and Officers, and Indore RFI team members. Once again, I, Dr. Priyanka Chawla, Vice President, World Virtual Conference Forum, would like to welcome you all in this online international workshop on how to improve API score, organized exclusively by Central India Board RFI. When the group of experts gather together,
at one place and share their views, opinion, with the objective of giving the right direction to the people through different platforms like conference, workshops, seminars, webinar, etc. An organization is formed. It is a place which motivates scholar to contribute toward research. It is a place which enhances skill and give opportunity to learn new things. Yes, here I am talking about the organization called Research Foundation of India, which is providing platform to all of us from last 10-12 years. Now, let us call the man behind this organization who bring up RFI at this booming stage. May I have a pleasure to invite Dr. Saurabh Jain sir to deliver a welcome address. Dr. Saurabh Jain sir. Thank you, Dr. Priyanka Chawla, madam. First of all, I wa- I have required to be discussed over there since long time. We are here to organize such type of webinar on how to improve API skill. First of all, I would like to welcome our chief guest, Dr. Sanjay Kumar sir. Namaskar, sir. Symbiosis Namaskar. Thank you. Thank you. Life Science Indore. Namaskar, sir. Dr. Ashok Kumar Gupta ji, Vice President Research Foundation of India, Chairman Sri KG Mittal College, Mumbai, Maharashtra Chapter Head Dr. Subhasini Arya, Madam, President Central Board of India, Research Foundation of India, Dr. Ajay Jain ji, Dr. Prakashini Tiwari, Madam, Dr. Deepak Agrawal ji, Dr. Manish Dubey ji, Dr. Rupesh Shukla ji, Dr. Kuldeep Agnihotri ji, and all chapter and chapter heads of Research Foundation of India, Dr. Sarita Rana, Madam, Dr. Seema Agrawal, Madam, and also welcome Dr. Sir, I am addressing one seminar. So, as we know very well, this webinar based on how to improve API. We know very well all academicians, academic performance indicator is the most important part of life of academician. On basis of API, every teacher willing to be become a big post like a vice chancellor and dean and star whatever. So that is the most important part of the academic field for professors and teachers. So thank you very much, Symbiosis University Indore and Sri KG Mittal College, Mumbai, to be part of this particular webinar on how to improve API in academic and teaching. So thank you very much to all of you and all chapter and chapter heads and technical team. And special thanks to Dr. Sanjay Kumar ji and Subhasini Arya madam and Professor Jain, Dr. Ashok Kumar Gupta ji. So thank you very much. Over to you, Dr. Priyanka Chawla madam. Thank you. Thank you so much, sir. Now let us have a pleasure of listening the opening remark from Dr. Ashok Kumar Gupta, sir. Thank you, ma'am. I welcome all of you in the workshop on how to improve your API score. I would like to thank our chief guest, Dr. Sanjay Kumar sir, Thank you. and special guest, Dr. Suhasini madam, and to the resource person of the day, Dr. Deepak Agrawal sir, Dr. Rupesh Shukla sir, Dr. Seema Agrawal. All are well-known persons, and the faculties are conducting regularly the various webinars and giving their expertise to the needy faculty and students. I hope this API score improving is the need of the day. Because AICT is going to improve the quality of the education. So until and unless you are increasing your API score, you will not achieve the desired quality in your profession. So I welcome all the dignitaries
and the expertise. Again, I would like to thank the team for conducting this beautiful webinar. My best wishes for this webinar. Thanks to all of you again. Thanks, RFI. Thank you so much, sir. Now I invite Dr. Manish Dubey sir to say a few words about this workshop. Dr. Manish Dubey sir. Thank you, Dr. Priyanka Chawla, madam. First of all, I welcome to all the guests and participants. Chief guest, Dr. Sanjay Kumar, sir, Vice Chancellor, Symbiosis University, Indore. Special guest, Dr. Suhasini Arya, madam, KG Mittal College, Mumbai. Chairman, Research Foundation of India, Dr. Saurabh Kumar Jain, sir. Vice President, Research Foundation of India, Dr. Ashok Kumar Gupta ji. Dr. Priyadarshini Agnihotri ma'am, President, North South Zone RFI. Subject experts, Dr. Deepak Agrawal ji, Dr. Rupesh Shukla sir, Dr. Seema Agrawal madam, Professor Ajay Jain, Central India President RFI, Dr. Sangeeta Bharuka ma'am, Dr. Subrata Day sir, Dr. Prakashni Tiwari madam, Dr. Sanjay Prasad sir, Dr. Kuldeep Agnihotri, and all the team of RFI members and all other faculties from various college and institutions. आप सभी का इस ऑनलाइन इंटरनेशनल वर्कशॉप में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं. द टुडेज टॉपिक दैट हाउ टू इम्प्रूव योर एपीआई स्कोर. देखिए जो एपीआई स्कोर ये वर्ड जो है एक्चुअली मेनी ऑफ अस हैव हर्ड मल्टीपल टाइम अबाउट the API score, but still many of us are not fully aware of the benefits and importance of it in real sense. तो आज के जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं डॉक्टर दीपक अग्रवाल सर, रुपेश शुक्ला सर एंड सीमा अग्रवाल मैडम, डेफिनेटली ये उन सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें देंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है एपीआई स्कोर का, व्हाई एपीआई स्कोर्स रिक्वायर्ड, हाउ वी कैन improve our API score and all. तो आई होप कि दिस सेशन विल बी फ्रूटफुल एंड बेनिफिशियल फॉर अस. इसके साथ ही मैं हमारी जो 2021 नए साल में अपकमिंग ईयर्स में हमारे दो बड़े इवेंट्स होने वाले हैं, मैं उनकी जानकारी यहाँ देना चाहूंगा. आवर फर्स्ट इवेंट इज गोइंग टू हेल्ड ऑन 4th of January 2021, 9 days faculty development program on practical aspect of ICT tool and online teaching in current scenario. This will be start from 4th of January to 12th of January. 9 days faculty development program rahega. The time will be 1 p.m. to 3 p.m. and it is going to organized by St. Paul Institute of Professional Studies Indore and Research Foundation of India, association with World Virtual Conference Forum and sponsored by World Federation of Science and Technology, International Research Guide Federation, and Academic Research Guide Association. Again, I repeat, 9 days faculty development program on practical aspect of ICT tools and online teaching in current scenario from 4th of January 2021 to 12th of January 2021. Second program will be on 10th of January, International Virtual Conference on Sustainable Development in Current Scenario, Social Science, Commerce, Management, Education, Medical, Pharmacy, Agriculture, IT and Engineering, and Humanities in Global Environment. The date of conference is 10th of January 2021. Organized by Research Foundation of India and Academic Research Guide Association, sponsored by International Research Guide Federation and World Federation of Science and Technology. Again, I repeat, International Virtual Conference on Sustainable Development. The date of
कॉन्फ्रेंस इज 10th of January 2021. तो आप सभी इसका हिस्सा बनेंगे. आई होप यू ऑल विल बी पार्ट ऑफ दीज इवेंट्स. इसके साथ ही मैं आप सभी को आज के इस कार्यक्रम में आप सभी की जो सहभागिता रही उसके लिए पुनः आप सभी का मैं साधुवाद प्रकट करते हुए अभिनंदन करता हूं. और निश्चित रूप से आज का जो हमारा सेशन है दैट हाउ टू इम्प्रूव योर एपीआई स्कोर, ये आप सभी के लिए आज का सेशन फ्रूटफुल रहेगा, ऐसी मुझे आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है. थैंक यू मैडम, ओवर टू यू. Thank you, sir, for giving information about upcoming events. Now, we have amongst us a very renowned personality who is going to grace this occasion with his presence as a chief guest. Our today's chief guest is Dr. Sanjay Kumar, sir, who is having rich experience in academic domain and explored himself in many areas during his academic career. Talking about his educational qualification, he completed his engineering from BITS Ranchi University, has done MTech, PhD from IIT Delhi, holds MBA degree along with 2 postgraduate diploma in management. Here, I would like to tell you that he has always been distinction holder, and in most of the service courses, he has been topper of the batch. He also possesses MS degree in counseling and psychotherapy. He has got oodles of research paper published in high reputed journals. He is the author of 7 books. His 2 popular books of engineering titled Concept and Application of Microwave Engineering and Wave Propagation and Antenna Engineering are published from renowned publisher Prentice Hall of India, Delhi, and prescribed in IITs and other lead colleges and universities. He has reviewed many research papers on technical and management basis. His core competency is in research methodology, electronics and communication, aerospace engineering, and HR management. He has distinction of having worked in ISRO, Space Application Center, Ahmedabad, Dehradun, Scientific Analysis Group, DRDO, and National Informatics Center, Delhi, and Defense Avionics Research Establishment, DARE, Bangalore. His varied specialization includes satellite communication, space and microwave design, and radar engineering, and many more. He has worked as principal advisor in Defense Avionics Research Establishment, DRDO, Bangalore. He is a prolific speaker on technical and management subjects. He has delivered his talks on various national and international forums. He is a guest editor and columnist of Hitavada Dainik Bhaskar and other leading dailies. He has been invitee of Doordarshan and All India Radio. He has guided many startup projects. His association with Confederation of Indian Industries is remarkable. He has been mentor of CII, Confederation of Indian Industries, at various forums. He is an eminent orator, a proven military leader, technocrat, world-class researcher, educationist, and a true academician. We are glad to know that he is a recipient of many accolades and awards. To name a few, he is a recipient of A.V. and Harjinder Singh Trophy for the best academic performance. He has also been conferred with Bihar Gaurav Samman by Governor of Bihar. He has also been commended and felicitated by Honorable Chief Minister Dr. Raman Singh in presence of youth icon Virendra Sehwag. He has been conferred with list of awards. If I speak all, then we can have to arrange one workshop on his biodata. One more thing. He's a patron of RFI. We are honored to have you as a chief guest, sir,
for today's session. Now I invite you, sir. Thank you, Dr. Priyanka, for your generous introduction. Dr. Saurabh Jain, Thank you. Mr. Ajay, and all the office bearers, organizers, and most importantly, distinguished faculty, students, and also the speakers today. A very warm good evening to all. It has always been a pleasure for me to talk on RFI forum. I find it very conducive. The reason is that each and everything is so well organized, and the subjects chosen has been very, very contemporary. Now the topic what has been chosen for the day, for the discussion and deliberation is API. Generally, API has got a lot of expansions. If I look at this from computer science and IT, it has got a different kind of an application program interface, we call it. But when it comes to the academics, it's a very well-known abbreviation, Academic Performance Index. So since I have been in this assessment part as one of the, being as a head of the institution and at various places, I have been very thickly involved into all that, because each time at the end of the year, and even nowadays we are doing 6 monthly reviews and carrying out a lot of assessments for the non-teaching as well as the teaching staff. Couple of practical approach which I would like to highlight today for all the participants, those who are listening to me and participating in this particular seminar and webinar. I shall be outlining all practical approach. When it comes to the Academic Performance Index, index is basically, it is something like a measurable measuring yard, how a person can be measured. Let me tell you that an individual can never be measured unless some measuring indexes are defined. Now for Academic Performance Index, there are certain measuring index. It means there are certain measuring yards. It means that an individual cannot be measured with one particular yard. It means that gauges, what you call it, the in electronics, these things, a lot many gauges are there. Let's say if you want to measure the volt, so you will have got to apply the voltmeter. If you want to measure the current, you have got to apply the ammeter. And if you really want to measure the resistance, you have got to go for the ohm meter or megger. So similarly, all sorts of the measuring instruments have got to be in place in any institution and universities to measure an individual. It's a very, very difficult task to measure the individual. But the most difficult part is that for the appraisee, because the appraisee has got to be fully aware about that what are the parameters through which his ability is really being assessed. Because the assessment is in a continuous process today. Today we are talking about the 360-degree assessment. And 360-degree assessment can only be done through the 360-degree feedback. And I shall be talking about the 360-degree feedback, how do we take it in the university, and what are the main parameters. Although you have got many subject experts here, so I will not take much of the time. But at the same time, I would like, when I am sitting as a head of the institution, as a vice chancellor, I will be in a position to definitely pinpoint certain lacunae in the system and also certain failures on the part of the appraisee. Generally, my dear friends, Academic Performance Index or any kind of your performance index, whether you are in a business or whether you are in a private sector, you are in the government sector. I have been also in a government servant as a matter of defense officer. I got commissioned as a pilot officer in 1984, and from pilot officer to flying officer, flight lieutenant and all that, and rose to the level of the air commodore, and willfully I sidestepped to get into the academics. Also, I have been for almost more than 2 decades in the research, core research. So the opportunities what I have got it is to assess the people and get assessed by my bosses also. Myself being as a presidential awardee,
twice. So basically we look at this, what are the parameters really going to matter for you? First of all, when we talk about the API, there are two aspects to this. One is your professional skill, and the second one is a behavioral skill. Now we must be wondering that professional skill is better or the behavioral skill is a better. As a matter of fact, there is nothing like a better. Both skills are required to be acquired. And let me tell you this, that no one is a born genius. It is all acquired while working. Only one thing I would like to attract your attention, that how you are going to develop the professional skill. When it comes to the professional skill, particularly in the colleges and the universities, you have got to align yourself to the vision and mission of the university and the institution. If you are perfectly aligned with that, definitely you will be doing much better. Now I'll be telling you that what are the major parameters where we look at the contribution of the professors and non-teaching staff. Particularly, I'll be talking about the professors when it comes to the academic part of this. First of all, what we are looking at, the criteria what we have for the MAC assessment or any kind of an inspecting agencies. Basically, one is the vision of the institution. It means that what the institution wants. Each institution has got certain different kind of priority, but the common priorities are some of them I would like to outline. First of all, you should be fully consistent and aware about the curricular of your own domain. It means that you should be knowing what are your course contents and how confident you are in delivering that course contents. So course outcomes, your learning outcomes, and at the same time students outcomes. It means that student outcomes means how many students are really passing out in that kind of a percentage or percentile, whatever the assessment criteria in there in a particular university. Like we have got the grade system. Let's say if you are teaching one course, I take one example. Second PhD is in management. I take one example of any management subject. Let's say organizational behavior. If you are teaching organizational behavior, your students, how many students? It means what is the percentage of your students they are getting A grade, or let's say they are becoming the 9-pointer or 10-pointers or 9.5 pointers. You will be finding that if you are giving if you are offering any particular course, so it means that how many students are really doing well in that, and what is the kind of a feedback the students are giving to you. It means today the feedback system is, one is your student feedback, the second feedback is your peer feedback, third feedback is your head of department feedback, fourth is your dean feedback, and then finally it comes to all around that how you are behaving. One is your performance index, that is I call it as a professional skill. We understand it's a professional skill. So you have got to understand the professional skill thoroughly. And when it comes to the professional skill, it means that each and every, as a matter of fact, I have got here in Symbiosis, we have got a very 360-degree feedback system and assessment system. And it is measured at every 6 months. And the parameters are more than hundreds to see to this that how much really you perform. So I will not go into all the details, but the general things I will be able to talk to you, that how we are looking at. First of all, how helpful you are to the institution in content development of a particular course. How many courses you are in a position to offer. That is very, very important. It means that the subject expertise is must for you. Then the teaching learning pedagogy. What is the kind of a contribution you have in the teaching learning pedagogy? What is the kind of a students diversity for your course? Let us say if you are offering a course and the students from engineering, arts, science, all are then joining your course, it means the student diversity are many more. So that credit goes to the teacher. Then again, the teaching learning process, what are the tools you are going to use? How many types of the IC tools you are really effectively utilizing, right? Then the next things come is that in any institution that looks forward from faculty is, what is the kind of an in-depth your research? And research, let me tell you, today in this country, we are suffering from this part.
In the name of the research, we are creating the papers which are substandard papers, and they are not even the Scopus or the Web Science. So what I'm saying, Scopus index, IEEE index, or let's say ABC category of the management, unless these papers are indexed well, unless they have got that kind of an impact factors for the journals where they are getting published, if you publish in somewhere here and there, it has got zero value. Let me tell you, and that is how your performance goes down. So the most important part here for a faculty today is that even the NAAC also gives 250 marks alone for the research, consultancy and extension. So my dear friends, you have got to really work very hard to see to this that you score well so far your professional skill is concerned in the area of the research consultancy. How many consultancy you have had, how many projects you got it from the government, how many projects you got it from the private organizations, or the next part is how many patents you have. And patents in true sense, let me tell you this, no eyewash. Patents means the government of India patent I am looking at, the Department of the Patent. Jahan par IPR, wherever the IPR is there, and it must have the government stamping, otherwise there is nothing. And patent takes a lot of time. You have, once you register it, after getting the patent is another 2 years, 3 years. It takes a lot of time unless you have got that kind of a brilliancy in the whole thing. So one patent, and then similarly for the ABC category journal publishing, it takes a lot of time. So it means that in a year, how many good publications you are in a position to publish. So how many books you have been able to publish, and that books also from the good publisher. One has got to go for this good publishers. In the way when you pass out from a good academic institution like IIT, etc., definitely your weightage will be much more. Similarly, the next part is that how much time you spend to utilize the learning resources. It means that how much time you are going to the library, how much you are involving the students in curricular activities, extracurricular activities, and co-curricular activities. My dear friends, one very, very important point which I would like to highlight as a head of the institution, which I am finding the faculty, they suffer into this, lack of visibility. Lack of visibility is a major cause of the failure of any academic staff so far their growth is concerned. And what I mean by the visibility? Visibility means that generally an individual try to do some kind of shortcuts. When your vice chancellor wishes, when your management wishes that you should be leading from the front, the people, they become the shy. They try to save their time. They try to save their skin and then try to, go on the backbencher. If you become the backbencher, if you take a back seat, you will never get good assessment. That is for sure. It means the visibility. Let's say convocation is there. If you are not in charge, why one should be wasting time in the convocations? I should be doing research. No, friend, no, it's a part of the university. It's a part of the co-curricular activities, part of the extracurricular activities. Each and every function is equally important. And today, the national education policy is dictating this part, that in every institution, all sorts of the activities must go. And a holistic development of the student is a requirement today. If you are not contributing towards the holistic development of the student, as well as the holistic development of the institution, probably will not get any good score. Take it granted from me. So I'm again reminding my dear friends that whosoever is lacking in the visibility part, and you will only become visible when you start radiating. And radiance kya hai? What is this radiance? Radiance is basically, since myself an engineering student from IIT, I will not define the intensity and lumens. But yes, the lumens, makes a lot of difference. If you are projecting some kind of a project or presentation through a low lumen projector, it will not be bright enough. If it is not bright enough, then it is not visible. So my analogy here is that individual brilliance has got to be there so that you are visible around. Let's say Mr. X is seen all around. He's good at research. He's good at the content development. He's good at teaching learning process. He's good at the getting the good feedback from the students, and his peer reviews are fantastic. So it means that this is how one has got to develop his or her personality holistically. A complete 360-degree development is required for you. Then the learning resources. It means that all kind of skills laboratories.
develop a lot of experimentation. You prepare all your slides and presentations and update it. The major problem with the teachers today here is that, since last 10 years, 15 years, they have been teaching only 1 or 2 subjects. I rotate the subjects in the university. Every 6 months, I keep rotating. It means that if you are going for in a particular, let's say UG classes, you don't need any specialization. Specialization is only required for the PhD and postdoctoral. It means that UG classes you should be in. If you are in a position to teach all these subjects, that's fair enough. If you are going for a specialization, yes, we need a specialized faculty. But at the same time, today, if you are teaching one particular subject, next semester you should teach the another one, and then keep updating as per the world's development. It should not be dating back past 20 years information you are passing to the students. They will not like it. And then you should be again IT savvy, because unless you use the ICT tools, it will not be good, because your delivery will be all substandard delivery. Then student support and progression. How you are measuring this? How much capable you are, having all kind of an alumni meet, etc. All kind of seminars, webinars, workshops, symposiums, consortiums. All those aspects are taken into the account. Then your leadership skill. Leadership skills, that how good you are, managing the show when it comes to students control, your class controls, your own peers control. It means they're not literally controlling, but what kind of an interpersonal relationship, that I will be talking, the behavioral skill, etc. Then your outreach, your best practices. A couple of more things which I would like to highlight, that basically institution also looks forward that how much you have brought the MDP. It means that you should be, like if you go for the IITs and IIMs also, they have been given a target, they have got to meet those targets. How much earning you do it for the institution. And if you are doing the earning for your institution individually also, you'll get benefited, because there are a lot of schemes from the city also, that individual also gets. These are all major things. The another important aspect is quality. Quality is one thing, again, most of the institutions we suffer like anything. It means that internal quality audit assurance system must move on. We must have the quality circle in all that. And you should be part of the quality circle. It means that you must involve yourself in the IQSE. IQSE involvement is required in content development, teaching learning process, research, consultancy, extension, outreach, governance, leadership, management, each and every aspect, quality has got to be there. When you are talking, you must talk quality. When we are really meeting with something, you must meet with that kind of a decency and the behavior. Is it okay? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Please continue. Right. Thank you. So the psychomotor skill is also equally important for you. And for behavioral skill, I'll recommend one thing, which is also one of my very pet research area, organizational behavior. You have gotten a topic which is called leadership and emotional intelligence. Emotional intelligence, you have got to really, if you are good at in IQ, you can get into an organization. But if you want to really sustain, develop, and grow in an organization, emotional quotient is must. And for emotional quotient, for increasing your emotional quotient, 6-7 constructs are there on which you must concentrate. One is emotional self-awareness, emotional awareness about others, then emotional creativity, emotional intensity, emotional interpersonal connectivity, emotional resilience. Resilience is very, very important part. 2 aspects I would like to highlight, because they are my very pet subject and I have researched quite a lot onto this. One is resilience and one is a constructive discontent. Please remember these 2 terminology. We call it an ERES.
emotional resilience, and the second one is emotional constructive discontent. Resilience means it is an ability of an individual to bounce back after facing any sort of setbacks or unsatisfactory conditions or any chaotic situation. How quickly you are bouncing back. Let's say something has happened, some mishap, but something somewhere has happened, but you are not able to concentrate in your class. You are off to the class most of the time. So that will be definitely damaging for you. So emotional resilience has got to be developed. The next one I said, emotional constructive discontent. Many times what happens, the faculty, even teaching, non-teaching, they are always in a mood of fighting mood. Organization is not doing this, VC is not doing this, management is not doing this, my head of department is not doing this the way I want. Friends, the change will remain as a change. You cannot change. So who can be changed? The best part is if you do not have any kind of control over your boss, then better you change it. And what he is wanting, no boss will want any kind of a favor. I feel the boss only wants that your assignment, as long as you are able to deliver your assignment on time with the quality, your assessment will go up. Automatically your API will improve. So I am looking at your emotional resilience, emotional constructive discontent. इसको बोलते हैं. Constructive discontent means even if you have got a different views, perspectives and thoughts, you should be in a position to present it in the most pleasing manner. For an example, let's say if you are not in agreeing with my views and perspective, you can say that, sir, if permitted, can I put my views and perspectives? It is up to the boss whether he accepts your ideas, he rejects your ideas. Even if he rejects your ideas, happily you accept it. I'm not saying that you compromise on your honesty, your integrity. I'm saying that views could be different. Your vice chancellor, your head of department, your dean, they are much more experienced than you. So one has got to look at this way. Any boss. So we have got to get aligned with the mission and the vision of the institution. That is how you will be scoring well. The another thing is that your emotional interpersonal connectivity. This is also a very important thing. It means that you must connect well with everybody. It is not that I'm the vice chancellor, so I'll be keep fighting to this thing, I'll keep bullshitting everybody. No, sir, no. Your humility always remains for a life with an individual. Remember this. This is one score where no one can really afford to go beyond that. And if you have gotten a docile nature, but at the same time, you should be assertive. You should be assertive and affirmative. Being a polite, it does not mean that you become the subservient. No, sir, no. Subservient, no. You must air your voice. You must put your points across, but in a pleasant manner. There are many research into this. I will not go into those areas. There's another thing which I would like to highlight quickly. Within 2 minutes, I will finish this so that other speakers will get an equal opportunity to speak. There is something called Jory window. And Jory window is one window in which we have got 4 windows. And 4 windows we have is basically your arena. And arena is one thing that has got to be enlarged. I will not teach right now, but another important window is your blind spots. If you really want to improve your API, your blind spots should be removed. It means all your weaknesses. You please audit yourself each day. My request to my all friends, participating friends, that you must audit yourself each day at the end of the day. How much did you deliver? How well you behave with your colleagues, with your subordinates, with your bosses. You please make an audit, and after having in your sincere audit, just look at this, how you can improve. Automatically things will be getting improved. Today, if you have done a good thing, let's say your delivery was fantastic, exceptional, students were extremely happy. Feel happy about that. Feel happy about that. So that is how we have got to look at this. If you have behaved well, no anger, sir, no. And then your time management. And time management will be only done
through your efficiency. You have got to enhance your skills to how to do this. Prioritize your task. Time management का best skill होता है prioritize your task. Anger, please remove it if at all you have. The anger in no way it is going to serve the purpose. It will degrade your grading. Definitely it will degrade. If you are in a fighting mode, please don't do this. Please do not do this, and participate in each and every activity of the university or your institution. This is must. I am sitting at the Vice Chancellor chair and suggesting all my learned colleagues, those who are listening to me. If you really want to grow, you have got to be very, very affirmative, positive, and assertive. तीन चीजें की जरूरत है. Assertive होना जब भी जरूरी है. आपकी अपनी points management को आपके boss को समझना चाहिए. Many times your boss will definitely appreciate that part. So affirmative, positive, and assertive. All these three aspects are required. So you must have the courage, conviction, and the power of communication. I'll touch this last point as in your soft skills. Soft skills is not only your polite skills. Soft skills is basically the power of expression, power of persuasion. Very, very important. Persistence, perseverance, and the power of persuasion. Three aspects. यदि कोई टास्क है तो ये दिमाग में ऐसा होना चाहिए कि जब तक ये हमारी मंजिल मिलती नहीं है तब तक मैं पीछे मुड़ करके नहीं देख सकता हूं. मैं इंडियन एयरफोर्स का एयर कमोडोर भी रहा हूं और हमारी जो है हम बात जब करते हैं तो स्पीड की बात करते हैं और स्पीड हैज गॉट नो रेलेवेंस अनलेस इट हैज गॉट एन एक्यूरेसी. If you are on the road and if you know you're driving at 100, jeeping at the speed of the, let's say 150 kilometer per hour, it means that one has got to go like this, that your accuracy. We fly the aircraft with 2 Mach speed, and if you can, with a blink of your eyelids, you will get crashed. If you are not attentive, it means your professional acumen has got to be exceptional. It should have enough brilliance in your profession. But at the same time, you must have your mind, cool mind, because when you sit in the cockpit, the only thing your performance is, and your API becomes that how well you are equipped so far your profession is concerned, and how good behaviorally you are. It means that how cool you are. In any kind of an emergency situation, you should be in a position to handle that emergency. Similarly, here also, on the ground, one has to be very, very emotionally stable. Emotionally stable individual, they grow well and they score well. Take this point today from my side, as per my pure experience. I'm not here teaching you or preaching you, but it's an experience that as long as you are remaining very stable, cheerful, remain always cheerful, no matter what the situation is. You should be in a position to do that and give in a deliver in a good work each day with that kind of an efficiency and the josh. Your enthusiasm should never get dampened. हम लोग के यहाँ पढ़ाई जाती है इंजीनियरिंग में oscillations में एक last stage आता है dampening का. Before the dampening comes, your trigger should come. Another signal must trigger your input. So you have got to speed up, you have got to spirit up and team up. Well, friends, with these words, I thank you very much for listening me very patiently. And once again, I thank to the RFI team led by Dr. Saurabh Jain and Ajay Jain and all other organizing members over here. And thanks a lot to all my participants. God bless you. Remain safe, sound. And for anything and everything, if you wish to have Symbiosis as your partner, you are most welcome. You can come meet me, and definitely I am sure that I will be in a position to help you and greet you. Thank you very much. Jai Hind. Thank you so much, sir, for such a motivation and knowledgeable words for all of us and giving the outline of API. Thank you so much, sir. Now we have our special guest for today's session, Dr. Suhasini, State President, RFI Maharashtra. I would like to read the profile of our esteemed guest. Dr. Suhasini R. is currently Principal at Srimati K.G. Mittal College of Arts and Commerce. Dr. Arya is MA, MPhil, and PhD in Economics. She has a total 30 years of leading experience for undergraduate and 14 years of postgraduate.
She was selected for UGC as a member of Swachh Ranking Committee. She has worked as NAC coordinator and chairman at IQAC. Dr. Arya has obtained ISO certificate in the year 2015. She was awarded by Samaj Ratna, Samaj Shri and Samaj Gaurav Award by Rajasthan Seva Sangh Trust. She is a member of Professional Association Services in association with NGO, Anti-Dowry Movement, Bharat Vikas Parishad, Gita Gyan Yog Kendra. She has published many research papers in conference and published ISSN and ISBN books too. Now, I would like to invite Dr. Suhasini Arya to kindly please us with her words. Please, ma'am. Ma'am, please unmute your mic. Sir, I was not audible. Can you hear me now? Yes, ma'am, you are audible now. Yes, ma'am. Okay. Thank you so much, Ranjan. I would like to make one correction. I am the director in Srimati KG Mittal College, not the principal at present. And good evening, one and all. My heartiest greetings to Dr. Saurabh Jainji, Chairman RFI, Professor Dr. Ashok Gupta, Vice President RFI, Dr. Ajay Jain, President Central India Board, Dr. Priyadarshini, our Chief Guest and Subject Expert, Professor Dr. Sanjay Kumar, Vice Chancellor, Symbiosis University, Dr. Deepak Agrawal, Dr. Rupesh Shukla, Dr. Seema Agrawal, and all the dignitaries and participants of this international workshop on how to improve your API score. Dear friends, I am honored to be a part of RFI and my gratitude to RFI for inviting me as a special guest. Sanjay Kumar ji, in nutshell, he spoke about the API, and here in short, even I would like to say something why university insists on the improvement of API, why they expect the teachers' API score should be high. It is not the numbers, but by the quality also. And API, as you know, all the teachers know that it definitely helps in the development of teachers, students, and as Sanjay Kumar sir said, that it should also contribute towards the institutional development of the institution and the society. I would like to quote a Sanskrit shlok here. Swasti prajabhya paripalayanta न्यायेन मार्गेण महिम महिषा गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकः समस्ता सुखिनो भवन्तु. May the welfare of all people be protected by the powerful and mighty leaders with law and justice. May the success be with all divinity and scholars. May all the world become happy. So we require a treasure full of knowledge to spread happiness and quality of life in the entire world. Let us produce scholars by setting up the universities like Takshashila and Nalanda, which imparted multidisciplinary teaching and research of high standards and hosted students and scholars like Charaka, father of medicine, Kautilya, Panini, Chandragupta Maurya, etc. Today, in this rapidly changing world, education system has to face multiple challenges. Therefore, there is an urgent need for eager and thoughtful teachers, and their training in interdisciplinary fields is very, very necessary. Professors have a determinant role in thinking eager, thoughtful, and intellectual minds, training the intellectual minds. Universities and colleges are places where new ideas sprout, roots of knowledge grow and strengthen. Therefore, research and exploration is very important for effective teaching learning methods in higher education. To prepare students in all the fields of life and ideology of balance, we must focus on
applied knowledge which is missing. For this, it is essential to create a perfect combination of academics and extracurricular activities, along with teaching in the area of mindfulness and spiritual awareness. API score for teachers. It is not only for their career advancement and promotions. It should be, along with their professional growth, it should contribute towards quality standard of higher education. It should also boost the growth and progress of the teachers and the students, and it should add to the development of the institution. Today's workshop on how to improve API score will throw light on various ways through which progress can improve. Professors can improve their API not only by numbers but also by standards. It is not only the quantity, what score I got, a score of API score of 400, 500 or 1000. That doesn't matter. What matters is by exploration, through the explorations, how you have improved in your teaching methods, how you brought changes in the students, what is your outcome of teaching. As sir said, teaching outcomes is also very important. Not only that, how you have brought qualitative development in the students. That is also very, very important. So today's webinar is going to be very enriching session, and it is going to help all the professors to have a wide knowledge about the API score as well, how to improve it. Thank you so much. Thank you all once again. Thanks a lot. Thank you, ma'am, for such a kind and knowledgeable words from your side. And yes, we will surely learn a lot from this API session. Thank you, ma'am. Moving ahead with our session, we have our first session expert as Dr. Seema Agrawal. It's my immense pleasure to read the profile of our session expert. Dr. Seema Agrawal is Central India Board member of RFI. She has more than 15 years of teaching experience. Currently, she is working as a visiting faculty in Nirbhay Singh Patel Government College, Indore. She has worked as an assistant production manager in Asha Handmade Paper Unit, that is at Bardwani. Dr. Agrawal had published and presented more than 20 papers in national and international conferences. Dr. Seema Agrawal was awarded the International Award for Innovative and Dedicated Teaching Profession by RFI. She is a member of World Research Journal, National Science Magazine, and member of Vigyan Bharati. So, with this, I would like to request Dr. Seema Agrawal to kindly continue with the session on the topic Basics and Need of API. Yes, ma'am. Thank you so much, Ranjana ma'am, for beautiful introduction. Good evening, everyone. First of all, I would like to give my sincere thanks to Dr. Saurabh Jain sir, Dr. Ashok Gupta sir, Dr. Priyadarshini ma'am, Dr. Ajay Jain sir, and whole RFI team to inviting me here to share my knowledge. Our today's guest, Professor Dr. Sanjay Kumar sir and Dr. Suhasini Arya madam, have delivered very important and useful information about API. Dear participants, in today's workshop, we will talk about what is API score and what is its role in recruitment and shortlisting criteria of assistant professor in universities and colleges. Whenever a fresher candidate applies for assistant professor post, candidate will have to fill this API form and calculate his or her score accordingly. When in any university or college where UGC 7 pay is being offered, and if any vacancy or recruitment came from there, so in that case, particular format and process is given that how to fill the application. You have to read the procedure carefully.
After getting PhD degree, you can take place in college and universities through API score. Now, I would like to throw some more light on this topic through PPTs. Here, API is the step. It is the most important step our way from assistant professor to professor. In the API score, when you are applying for the assistant professor, then there is a no API score. Then there is a no minimum API score is eligible. But in the case of associate professor and professor, there is a 125 and 175 score is applicable. API स्कोर का API जो है उसका स्कोर का हमारे पास 60% वेटेज रहता है। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि कितना ज्यादा आपकी जो नौकरी है, आपकी सर्विस है, आपके प्रमोशंस हैं, उसमें एपीआई का कितना ज्यादा वेटेज है। 60% आपका एपीआई का वेटेज रहता है और 40% जो है आपके इंटरव्यू का वेटेज रहता है। एपीआई जो स्कोर है ये हमारा 3 कैटेगरी में डिवाइड रहता है। फर्स्ट कैटेगरी जो रहता है वह है एकेडमिक रिकॉर्ड ऑफ द एप्लीकेंट। आपका एकेडमिक रिकॉर्ड, आपने 10th स्टैंडर्ड से जो हाईएस्ट डिग्री आपने अचीव किया है, आइदर वो एमफिल है और पीएचडी है, नेट है, स्लैट है, जो भी आपका हायर डिग्री है वो सारा आपका कैटेगरी फर्स्ट में आ जाता है। इन कैटेगरी सेकंड रिसर्च एक्टिविटी, जो भी आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, एमफिल में आपने जो भी प्रोजेक्ट किए हैं, सेमिनार किए हैं, वहां आपने जो भी पेपर प्रेजेंट किया है, इनवाइटेड लेक्चर्स दिए हैं, रिसर्च सुपरविजन किया है, ये सारा आपका कैटेगरी सेकंड में आता है। एंड इन कैटेगरी थर्ड रिसर्च पब्लिकेशंस। रिसर्च पब्लिकेशन, आपने कितना ज्यादा पब्लिकेशन किया है, पीर रिव्यू में करा है या कोर जर्नल में किया है, किसमें आपने कितनी ज्यादा जर्नल पब्लिश करे हैं, बुक आपने पब्लिश करी है, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएगी। Yes, next please sir. Thank you sir. जब भी कोई फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई करता है किसी भी, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज का अपना अपना एक एपीआई का स्टैंडर्ड होता है, उनका अपना अपना एपीआई फॉर्मेट होता है यहाँ पर। लेकिन जब भी आप फ्रेशर यदि अप्लाई करते हैं तो ये जो टेबल दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग आपका वेटेज रहता है। ग्रेजुएशन में यदि आपके मार्क्स 80% या उससे अबव है तो आपका एपीआई स्कोर हो जाता है 15, आपको उसके 15 मार्क्स मिलेंगे, 15। यदि आपके 80% से कम और 60% से ज्यादा मार्क्स हैं तो आपका एपीआई स्कोर हो जाता है 13। यदि आपके 55 से 60 के बीच में परसेंटेज है तो आपको एपीआई स्कोर मिलेगा 10। नेक्स्ट हम आते हैं पीजी पर, पोस्ट ग्रेजुएशन। पीजी में आपको यदि आपके 80% से अबाउ है तो आपको मार्क्स मिल रहे हैं 28। यदि 60% से लेस, 60 और 80 के बीच में है तब आपको मिल रहे हैं 25 मार्क्स। एंड इफ यदि आपके मार्क्स 55 और 60 के बीच में है तो आपको मिल रहे हैं 20 मार्क्स। ये अब आपको सभी जो भी आप इंडिविजुअल है आप इसके अकॉर्डिंग अपना डाटा निकाल सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं। एमफिल यदि आपने किया है तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन अभी चल रहा है। एक्चुअली अभी की जो हमारी नई नीति आई है उसमें एमफिल को वेटेज नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर हम एपीआई की बात कर रहे हैं, एपीआई में स्टिल इसको वेटेज है। यदि आपके पास एमफिल है 60% से अबव है तो उसके आपको 7 मार्क्स मिल रहे हैं, और यदि 55% और 60 के बीच में है तो आपको 5 मार्क्स है, और यदि 55 से कम मार्क्स है तो आपके इसका कोई भी वेटेज नहीं है। सेम इसी तरह जो हमने ऊपर देखा था ग्रेजुएशन या पीजी लेवल पे भी, यदि आपके 55 से कम मार्क्स हैं तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। पीएचडी की बात करते हैं, ये हमारा जो है ये टेबल जो है यूनिवर्सिटी लेवल के लिए है। क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए आपको 30 मार्क्स मिल रहे हैं। नेट विथ जेआरएफ है तो 7 मार्क्स है, और नेट है आपका सिंपल तो आपको 5 मार्क्स है। यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि कुछ स्टूडेंट जो है वो बहुत बार नेट देते हैं और क्वालिफाई होते जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जितनी बार दिया है आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपका सिर्फ एक ही बार का नेट इसमें मान्य रहेगा।
इसी तरह जो रिसर्च पब्लिकेशन है, हर रिसर्च पब्लिकेशन के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर आपको मैक्सिमम 10 मार्क्स है। इसका मतलब कि आप मैक्सिमम 5 रिसर्च पेपर आपने करे होंगे तो उसको आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे, और यदि आपने 5 से ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश करे हैं तो भी आपको मैक्सिमम मार्क्स 10 ही मिलेंगे। टीचिंग एक्सपीरियंस जो है आपका या पोस्ट डॉक्टरेट एक्सपीरियंस है, उसको आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स पर ईयर। यहाँ पे भी यदि आपका एक्सपीरियंस यदि 5 साल से ज्यादा का है तो आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस तरह से जो हमारा मार्क्स होता है, ये देखिए आपको नीचे दिख रहा है कि एमफिल और पीएचडी का जो मार्क्स है, आपको मैक्सिमम मार्क्स 30 है। आपका नेट है, स्लैट है, जीआरएफ है, उसका मैक्सिमम मार्क्स 7 है। एकेडमिक स्कोर इस तरह आपका हुआ 80। यदि हम टोटल एकेडमिक स्कोर यदि देखते हैं, में हम यदि 80% अबाउ हम जो मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, एकेडमिक स्कोर हुआ 80%। आपका रिसर्च पब्लिकेशन पे आपके 10 स्कोर है, और टीचिंग एक्सपीरियंस के अगेन आपको 10 पॉइंट है। इस तरह टोटल आपका 100 आता है। तो जब भी आप एप्लीकेशन डालते हैं तो सबसे पहले आपके एपीआई के बेसिस पर आपकी शॉर्ट स्क्रीनिंग होती है। आप यहाँ से यदि शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं तो आप इंटरव्यू वाली पोजीशन पर जाते हैं। यस सर, नेक्स्ट प्लीज। अभी हमने देखा था यूनिवर्सिटी लेवल पे। यदि हम कॉलेज लेवल पे जाते हैं तो वहां हमारा जो एपीआई रहता है, ग्रेजुएशन के लिए यदि 80% से अबव मार्क्स हैं तो आपका स्कोर रहेगा 21। 60 और 80 के बीच में यदि आपके मार्क्स हैं तो आपका एपीआई स्कोर रहेगा 19। 55 और 60% के बीच में है तो यहाँ पे रहेगा 16। आप देख रहे हैं मार्क्स में थोड़ा सा बदलाव आ गया है, चेंज आ गया है। पीजी में मैडम, एक्सक्यूज मी मैम, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, हमें दिख कुछ नहीं रहा है। अच्छा ऐसा, सर प्लीज अजय सर। So, मैम द स्क्रीन इज शेयरेबल। आप उनके मैम के जो फोटो है उस पर पिन करिए। जी, पिन किया। स्क्रीन इज शेयरेबल मैम। यस यस मैम। इज ओके भारती मैम? नहीं, मुझे नहीं दिख पा रहा है मैम। नो, स्क्रीन शेयर हो रहा है, स्क्रीन शेयर हो रहा है मैडम। तो अजय जैन सर को वहां पर पिन कर दीजिए आप, तो शेयर होगा। हाँ जी सर, क्या करें सर? अजय जैन सर के वहां पर पिन कीजिए तो स्क्रीन शेयर हो जाएगा। अजय सर के उसमें 2 फोटो आ रहा होगा, एक में आ रहा होगा प्रेजेंटेशन और एक में अजय सर। तो जहां पर अजय सर ने प्रेजेंट किया उस पर पिन करिएगा, क्लिक करिएगा। अजय सर की प्रेजेंटेशन पे। I hope it is visible to you now. कर पा रहे हैं आप? नहीं मैम, नहीं कर पा रही हूँ। अजय सर के 2 नाम दिख रहे होंगे आपको। हाँ, मुझे 3 नाम दिख आप लैपटॉप से हैं कि मोबाइल से? मैं मोबाइल से। 3 names, I see 3 names. Is it visible, ma'am? No, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Can we start? Yes, please. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो ये वाला जो हमारा टेबल दिख रहा है, ये हमारा कॉलेज लेवल का है। जैसे कि अभी मैंने बताया था, ग्रेजुएशन लेवल पे यदि आपका 80% और अबव है तो हमको 21 मार्क्स मिलेंगे। 60 और 80 के बीच में मार्क्स है तो 19 मार्क्स मिलेंगे। 55 और 60% के बीच में आपके मार्क्स है तो आपको 16 मार्क्स मिलेंगे। पीजी में आप 80% और अबव है तो 33 मार्क्स मिलेंगे। 60% से लेस और 80% 60% और 80% के बीच में यदि आपके मार्क्स हैं तो आपके मार्क्स मिलेंगे। 50% के बीच में तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। एमफिल में यदि आपके 60% एंड अबव है तो आपको यहाँ पर 7 मार्क्स मिलेंगे। 55 से और 60 के बीच में है तो 5 मार्क्स मिलेंगे। 55 से कम यदि मार्क्स है तो यहाँ पे भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे एमफिल का। पीएचडी का हमने यूनिवर्सिटी लेवल पे हमको 30 मार्क्स मिल रहे थे, लेकिन कॉलेज लेवल पर पीएचडी के 20 मार्क्स हैं। यहाँ पर नेट विद जीआरएफ के मार्क्स बढ़ गए हैं। नेट विद जीआरएफ आपका यदि है तो आपको 10 स्कोर है। नेट यदि सिंपल आपका नेट है तो आपके 8 स्कोर है। अगेन यहाँ पर रिसर्च पब्लिकेशन के मार्क्स कम हो गए हैं। रिसर्च पब्लिकेशन में वहां पर आपको मैक्सिमम 10 मार्क्स थे, यहाँ पर आपके 6 मार्क्स हैं इनके। इसका मतलब कि यदि आपने 3 पब्लिकेशन तक करे हैं तब तो आपको मार्क्स मिल रहे हैं, और यदि 3 से ज्यादा भी किए हैं तो आपको मार्क्स इंक्लूड नहीं हो पाएंगे। सेम आपका जो टीचिंग है, टीचिंग में अगेन आपको 10 मार्क्स मिल रहे हैं, मतलब 5 इयर्स के आपके मार्क्स यहाँ पे भी
इंक्लूड हो रहे हैं। इस तरह यहाँ पर एमफिल और पीएचडी के मैक्सिमम मार्क्स आपके पास हो गए हैं 20 मार्क्स, जीआरएफ नेट और स्लैट के 10 मार्क्स हैं, एकेडमिक स्कोर हो गया इस तरह आपका यहाँ पर 84, रिसर्च पब्लिकेशन के हैं 6 मार्क्स और टीचिंग एक्सपीरियंस जो है आपके उसके हो गए 10 मार्क्स। इस तरह आपका टोटल 100 मार्क्स हो जाते हैं। ये जो स्कोर है ये हर कैंडिडेट अपने अकॉर्डिंग निकाल सकता है, उसके पास उसकी मार्कशीट्स रहती हैं, उस हिसाब से वो अपने आप को बता सकता है कि मुझे इतने मार्क्स मिल रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया रहता है जब आप फ्रेशर हैं और आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं तब। यस सर, नेक्स्ट प्लीज। जब आप ऑलरेडी कॉलेज में रहते हैं और आप वहां पे प्रमोशन चाहते हैं तो वहां पे भी ये एपीआई बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि अभी संजय सर ने बताया था और मैम ने भी बताया था कि एपीआई जो है, एपीआई हमारे करियर को एनहांसमेंट करने की एक स्कीम है। आप बस एक बार स्कूल या आप कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं तो आपको हर साल आपको एपीआई फिलअप करना पड़ता है, और आप ये एपीआई एक आपका एक तरह से कह सकते हैं कि आपने कितना आपने उस साल में काम किया है वो आपको बताता है, आप इंडिकेट करते हैं उसको। जैसे यदि सपोज हमारे पास बहुत सारे लेवल रहते हैं, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर, यदि हम बात करते हैं कि जो एक जनरल जूनियर जो असिस्टेंट प्रोफेसर लगता है जिसे हम एकेडमिक लेवल पर 10 बोलते हैं, एकेडमिक लेवल इनका 10 होता है। से यदि आप प्रमोट करना चाहते हैं अपना सीनियर स्केल पर असिस्टेंट प्रोफेसर में ही, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी हो जाएगी कि आपने कम से कम असिस्टेंट प्रोफेसर पे आपने 4 साल काम किया हो, है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर हैविंग कंप्लीटेड 4 years ऑफ सर्विस, है ना, विद पीएचडी डिग्री और 5 years ऑफ सर्विस विद एमफिल और पीजी डिग्री, ठीक है। इस तरह से आपने ओरिएंटेशन अटेंड करा हो, आपने रिफ्रेशर कंप्लीट किया हो, या फिर आपने कोई भी वर्कशॉप अटेंड की हो। इस तरह से सबका अलग अलग क्राइटेरिया है कि किस तरह से आप जब एक बार यदि असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए तो उसमें आप सीनियर स्केल पर किस तरह से जाएंगे। यदि यहाँ पर एक चीज और है, यदि आपने जो एपीआई भरा है, एपीआई सिर्फ आपका हर साल भरने से काम नहीं चलेगा, उसमें आपका स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए। यदि आपका स्कोर 80% से ऊपर है एपीआई में, तभी आपको जो यहाँ पर लिखा है ना कि टीचर गेट सेटिस्फैक्ट्री और गुड ग्रेड, गुड ग्रेड आपका तभी होता है जब आपका एपीआई स्कोर 80% से ऊपर होता है। यदि एपीआई आपका 70 to 80% होता है तब आप सेटिस्फैक्ट्री में आते हैं, और यदि आपका एपीआई स्कोर 70% से भी यदि कम रहता है तो आपको प्रमोशन नहीं मिलता है। यस सर, नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू सर। ये इसी तरह से सभी उसका है कि यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर 11 से आप सेकंड 12 में जाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग क्राइटेरिया है, अलग एलिजिबिलिटी है ना। इन सबको भी हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम का भी शॉर्टेज है। यस सर, प्लीज नेक्स्ट प्लीज। ये 12 to 13 है, असिस्टेंट प्रोफेसर टू एसोसिएट प्रोफेसर। अभी आप असिस्टेंट टू असिस्टेंट सीनियर हो रहे थे, यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर टू एसोसिएट प्रोफेसर। देखिए यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, यहाँ पर है असिस्टेंट प्रोफेसर who have completed 3 years of service in this grade, है ना। इस ग्रेड में आपकी सर्विस क्लियर हो जाना चाहिए। पीएचडी डिग्री यहाँ पर आपकी कंपल्सरी है। इसके बाद में आपका एनी वन ऑफ फॉलोइंग ड्यूरिंग लास्ट 3 years। और ये जो आपको एक चीज बता दूं मैं, आप जब भी प्रमोशन चाहते हैं या लेवल चेंज होता है तो आपका लास्ट 4 year का एकेडमिक रिकॉर्ड देखा जाता है, एपीआई स्कोर देखा जाता है। यहाँ पे भी वही है कि वर्कशॉप है और ये आपने कितने अटेंड करे हैं, तो इस तरह से। और ये आपका सबसे मेन बात का आपका सेटिस्फैक्टरी और गुड आपका रिकॉर्ड होना चाहिए। यहाँ आपको बार बार दिख रहा होगा कि जो प्रमोशन है वहां पर टीचर लिखा हुआ है, तो टीचर कि जो हमारा ऑर्डिनेंस 19 है उसके अकॉर्डिंग टीचर मतलब होता है यूनिवर्सिटी या कॉलेज में टीचर वह होता है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, इन सभी को ये टीचर से प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो आप टीचर का कुछ अलग मतलब नहीं है, टीचर मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर। यस नेक्स्ट प्लीज सर। अब देन लास्ट हमारा एसोसिएट प्रोफेसर टू प्रोफेसर। प्रोफेसर में भी हमारे अलग अलग लेवल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी रहती है वो आपको एसोसिएट प्रोफेसर में कम से कम 3 साल होना ही चाहिए, पीएचडी डिग्री कंपलसरी है, कम से कम आपके 10 रिसर्च पेपर पीर रिव्यूड या यूजीसी लिस्टेड जर्नल में पब्लिश होना चाहिए। आपका जो मिनिमम रिसर्च स्कोर होता है एपीआई स्कोर वो 110 होना चाहिए। आपका एपीआई
गुड होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट सर। या अभी हम जो एपीआई स्कोर जनरली मोस्टली जो कॉलेजेस में फॉलो होता है वो एपीआई हमारा जो यूजीसी रेगुलेशन 2010 वाला है वो है। मैं एक बार जस्ट आपको सिर्फ एक बता रही हूँ, देन हम जो करेंगे वो हम 2016 वाला जो एपीआई है वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी आप जब भी अप्लाई करते हैं तो किसी भी या तो आपको नेट के माध्यम से पता चलता है या जनरली पेपर में निकलता है, तो वहाँ एडवर्टाइजमेंट नंबर में आपका पेपर का आ जाएगा सारा। नेम ऑफ एप्लीकेंट, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पोस्ट है ना, किसके लिए अप्लाई करते हो, नेम ऑफ डिपार्टमेंट। यस सर। ये जो अभी हमने आपको कैटेगरी बताई थी कि कैटेगरी 1, 2 और 3, तो यहाँ पर इन्होंने कैटेगरी नंबर 1 का दिया है जिसमें टीचिंग, लर्निंग एंड इवोल्यूशन रिलेटेड एक्टिविटीज बताई हैं। यहाँ पर आगे उन्होंने नेचर ऑफ एक्टिविटी लिखा है, उसके मैक्सिमम मार्क्स लिखे हैं। सेल्फ असेसमेंट, इसका मतलब सेल्फ असेसमेंट की मतलब हम अपने आप को कितने मार्क्स दे रहे हैं। इन्होंने लेक्चर, सेमिनार वगैरह सब बताया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को मार्क्स दे देते हैं। आप अपने आप को मार्क्स दे देते हैं, इसके बाद में आपका जो भी सीनियर रहता है या जो प्रिंसिपल या डायरेक्टर रहते हैं उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज के, वो आपके इसको वेरीफाई करते हैं। पहले ऑफिस से वेरीफाई होता है, देन लास्टली प्रिंसिपल उसको वेरीफाई करता है। हम इसको डिटेल में अभी नेक्स्ट देखते हैं। यस सर प्लीज। कैटेगरी सेकंड में हमारा क्यूरिकुलर एक्टिविटी, एक्सटेंशन एंड प्रोफेशनल एक्टिविटी सारी आ जाती है। कि जैसा कि अभी संजय सर ने हमको बताया ही था कि जो एपीआई होता है वो सिर्फ प्रोफेशनल स्किल का ही नहीं होता है, बिहेवियर स्किल का भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप स्टूडेंट्स के साथ किस तरह से इन्वॉल्व है, वो सारी चीजें हमारी कैटेगरी सेकंड में आ जाती हैं। यस सर प्लीज। यस सर, नेक्स्ट सर। नेक्स्ट सर। या दिस इज कैटेगरी थर्ड। कैटेगरी थर्ड में आपका रिसर्च एंड एकेडमिक कंट्रीब्यूशन आ जाता है कि आपने रिफर्ड जर्नल में पेपर पब्लिश किया है, नॉन रिफर्ड है, पीयर रिव्यूड है, बुक आपने कहाँ कहाँ पब्लिश करी है, वो सारी चीजें रिसर्च एंड एकेडमिक कंट्रीब्यूशन में आ जाती है। यस सर, नेक्स्ट प्लीज सर। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट सर। या ये जो अभी हम देख रहे थे, ये हम 2010 वाला देख रहे थे। बहुत सारे कॉलेजेस 2010 वाला ही एपीआई अभी फॉलो करते हैं। तो जब हम यदि 2016 वाला समझ लेंगे तो 2010 वाला आपको बहुत ही इजी हो जाता है। मैं यहाँ पर जो एपीआई प्रोफार्मा आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, ये हमारा न्यू यूजीसी रेगुलेशन 11 जुलाई 2016 वाला है। ये सभी के लिए है, आपका करियर एनहांसमेंट के लिए है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए है ना। पार्ट 1 में तो वही सारा आपका आ जाता है कि आपका नाम क्या है, किस कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हैं, डिपार्टमेंट, करंट डेजिग्नेशन, आपका लास्ट प्रमोशन, यदि आप जैसे किसी हायर पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अपने लास्ट प्रमोशन आपका कब हुआ था, किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, क्या आप उस चीज के लिए एलिजिबल है ना, कब आप उस प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो गए थे, आपका एड्रेस क्या है, टेलीफोन, मेल, है ना, ये तो जनरल इंक्वायरीज रहती हैं। यस, नेक्स्ट प्लीज सर। यहाँ पे आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस आ जाती है, आपकी एसएससी की, ठीक है, एसएससी, एचएससी, ये सारे आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन है ना, आपके किस यूनिवर्सिटी से आपने किया है, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज आपको कितने मिले थे, डिवीजन या ग्रेड आपका कितना था, किस सब्जेक्ट में आपने किया है। इसी तरह 10th हमारा जो रहता है, ये आपका एमफिल, पीएचडी, आपने डीलिट जो भी करा है उसका टाइटल, यूनिवर्सिटी, आपका डेट ऑफ अवार्ड। देन आपका जो 11 पॉइंट है, अपॉइंटमेंट हेल्ड प्रायर टू ज्वाइनिंग द इंस्टीट्यूट। आपने यदि किसी और पोस्ट के लिए, जैसे आपने सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कर रहे हैं या एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के लिए कर रहे हैं, तो आपने इसके पहले कहाँ कहाँ काम किया है, वो सारी डिटेल्स यहाँ आ जाती है। नेक्स्ट प्लीज सर। देन यहाँ पर जो है आपका डेजिग्नेशन है ना, पोस्ट होल्ड्स आफ्टर अपॉइंटमेंट इन एट दिस इंस्टीट्यूट। आपने इस इंस्टीट्यूट में यदि काम करा है तो वहाँ कौन कौन सी पोस्ट पे काम किया है आपने। इसके बाद में पीजी क्लास का आपका एक्सपीरियंस कितना है, यूजी का कितना है, आपने रिसर्च एक्सपीरियंस यदि है, एक्सक्लूडिंग आपका एमफिल और पीएचडी। ये प्लीज याद रखिएगा, आप लोग क्या करते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स पीएचडी को भी आप एज आपका रिसर्च एक्सपीरियंस मान लेते हैं, तो वो रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं होता है। इसके बाद में हमारा 15 पॉइंट है, फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन अंडर द सब्जेक्ट।
आपका कि जैसे मैं सपोज मैं केमिस्ट्री की हूँ, तो केमिस्ट्री में मेरा स्पेशलाइजेशन क्या है, वो हम वहां बताएंगे। यस सर, थैंक यू सर। यहाँ पर फिर हमारा आ जाता है कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कर रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का पूरा दिया हुआ है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कर रहे हैं, तो उसका सर्विस रिक्वायरमेंट क्या-क्या है, मिनिमम एकेडमिक आपका रिकॉर्ड क्या है, ठीक है। असिस्टेंट सेकंड आपका जो है असिस्टेंट प्रोफेसर इक्विवेलेंट स्टेज 3 के लिए यदि कर रहे हैं, तो वहां भी हमने जो लास्ट में देखी थी वही सारी चीजें अगेन यहाँ आ गई हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर 3 के लिए कर रहे हैं आप, या एसोसिएट प्रोफेसर के लिए कर रहे हैं, या फिर प्रोफेसर के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ सारी आपकी मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशंस है कि आप उसके लिए एलिजिबल है भी या नहीं है। यस, नेक्स्ट प्लीज सर। दिस इज पार्ट बी। ओके, पार्ट बी में हमारा जो रहता है टीचिंग, लर्निंग एंड इवोल्यूशन रिलेटेड एक्टिविटी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पर आप जो भी कॉलेज में लेक्चर्स रहते हैं, प्रैक्टिकल रहते हैं, ट्यूटोरियल लेते हैं, उन सभी के मार्क्स हैं, वो आपने कितने लिए हैं, एक्चुअल आवर्स स्पेंड पर एकेडमिक ईयर, आपने एक एकेडमिक ईयर में कितने ऑफर लिए हैं, वो आपका सेकंड पॉइंट में आ जाएगा। इसके बाद में पर आवर स्पेंड आपने टोटल आवर्स कितने लिए हैं, वो आ गया। फिर यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका है कि आपका जो मतलब टोटल आवर है, टोटल आवर डिवाइडेड बाय 7.5 ये होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 70 स्कोर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह एसोसिएट प्रोफेसर के लिए हम जो जितने भी ओवर आपके निकले हैं उसको 7.75 से डिवाइड करेंगे, और ये आपका मैक्सिमम ओवर 60 से ज्यादा स्कोर आपका जो है 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेम प्रोफेसर के लिए रहेगा। देन लास्ट में हम एपीआई स्कोर, हम हमारा सिर्फ एपीआई स्कोर यहाँ पे लिख देंगे, कमिटी अपने अकॉर्डिंग एपीआई स्कोर वेरीफाई करके लिख देती है। इसके बाद में आपने एग्जामिनेशन ड्यूटी आप लोग सभी करते हैं, यदि आप लोग ऑलरेडी कॉलेज या स्कूल, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में हैं, तो हम जो ड्यूटीज करते हैं उसका आ जाता है। आपने पेपर सेटिंग करी है, इन्विजिलेशन दिया है, आंसर शीट को इवोल्यूशन करते हैं, तो उन सबके मार्क्स हैं। इसके बाद में आप कोऑर्डिनेटर हैं, किसी चीज के आपने यदि वर्कशॉप करी है, सेमिनार करी है, उस कोऑर्डिनेटर है, तो उसकी भी बातें हैं। आप अनफेयर मीन्स कमिटी में है या आप एक्सपर्ट कमिटी में है, जिसमें भी है, तो वो। नेक्स्ट प्लीज सर। इनोवेटिव टीचिंग लर्निंग मेथड आप यदि यूज करते हैं, है ना, आईटीसी टूल, जो अभी हमारा लॉकडाउन के कारण तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा हो गई हैं कि हम किस तरह से स्टूडेंट्स को घर बैठ के पढ़ा रहे हैं, इंटरेक्टिव आप किस तरह से कोर्स कर रहे हैं, इन सब के आपके जो टोटल आवर्स है वो आपको निकालना है, और उन मार्क्स को हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 10 करते हैं। लेकिन ये मार्क्स जो है आपके मैक्सिमम सारे मिला के जो भी आप हैं, आपको सारे मार्क्स मिला के 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए ये मार्क्स मैक्सिमम 15 रहेंगे, और प्रोफेसर के लिए ये सारे मार्क्स मैक्सिमम 20 रहेंगे। यहाँ पर हमारे पास 3 कैटेगरी थी, आपने देखा था ए, बी और सी, तो यहाँ हमारा जो टोटल आता है वो ए, बी और सी का तीनों का है। यहाँ पर है आपका पार्टिसिपेशन इन सेमिनार, आपने सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, शॉर्ट टर्म जो ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं, उसके आपके मार्क्स आ जाएंगे कि वो आपने कितना ओवर लिया है ना, जो भी आपने ओवर लिया है, ओवर डिवाइडेड बाय आपका 10 से आप करेंगे। लेकिन मैक्सिमम आप ध्यान रखिए, मैक्सिमम में 15 से ज्यादा स्कोर नहीं होना चाहिए। इसी तरह आपने यदि कोई रेफ्रेशर में या ओरिएंटेशन करा है, एफडीपी, जैसा भी आप मनीष सर ने बताया था कि एफडीपी हमारी होने वाली है, तो आपने कोई भी एफडीपी अटेंड करी है, तो उसके भी मार्क्स यहाँ पर आ जाएंगे। आप यदि किसी भी नेशनल, इंटरनेशनल या स्टेट एसोसिएशन के मेंबर हैं, उसके मार्क्स आ जाते हैं। अब आपने किसी भी प्रोसीडिंग में या न्यूज़पेपर में, मैगजीन में आर्टिकल पब्लिश करा है,
जो कि आपकी, ये ध्यान रखिएगा, जो आपकी कैटेगरी थर्ड में इंक्लूड नहीं है वो यहाँ पर आएगा। कई लोग क्या करते हैं कि कुछ जो आपके आर्टिकल्स हैं या पेपर हैं वो कैटेगरी सेकंड में भी डाल देते हैं और कैटेगरी थर्ड में भी। तो प्लीज ध्यान रखिए, आपको कैटेगरी सेकंड में यदि आप कोई चीज ले रहे हैं तो वो कैटेगरी थर्ड में नहीं आएगी। कैटेगरी सेकंड में हम पेपर या पेपर्स नहीं ले रहे हैं, रिसर्च पेपर नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर हमने लिया है पब्लिक आर्टिकल पब्लिकेशन है, जो कि आपके प्रोसीडिंग में, न्यूज़पेपर में या मैगजीन में जा रहा है। वही आपका रेडियो टॉक है या चेयर में कोई सा आपने सब्जेक्ट में जो है वो दिया है, पीएचडी का वाइवा ले रहे हैं या आप रेफरी या एमफिल या पीएचडी थीसिस के, तो ये सारी चीजें के आपके पॉइंट्स मिलते हैं। तो इस तरह से आपको एपीआई में प्रोफेशनल स्किल के साथ साथ बिहेवियरल स्किल के भी मार्क्स जुड़ेंगे। आपका जो कैटेगरी, यस सर, नेक्स्ट प्लीज। जो हमारा है कंट्रीब्यूशन टू आपका कॉर्पोरेट, यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जैसे जनरली कॉर्पोरेट में या आप विजिट भी कराते हैं स्टूडेंट्स को, तो विजिट करवा रहे हैं या आप कहीं पे कॉर्पोरेट सेक्टर में भी यदि हैं, वहां पार्टिसिपेशन करवा रहे हैं बच्चों से, या आपका खुद का पार्टिसिपेशन है, तो वहां पे भी आपको 50 पॉइंट पर असेसमेंट पीरियड के मिल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 50 पॉइंट पर असेसमेंट पीरियड के मिल रहे हैं। असेसमेंट ये आपके 50 पॉइंट है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट के लिए भी 50 पॉइंट है, बट प्रोफेसर के लिए ये पॉइंट है 100 पॉइंट है असेसमेंट के। ठीक है, ये हमारा था कैटेगरी सेकंड का। यस नेक्स्ट सर। या थैंक यू सो मच ऑल। मैंने कैटेगरी सेकंड तक लिया है, कैटेगरी थर्ड हमारे जो नेक्स्ट सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं वो स्टार्ट करेंगे। मैम कैन यू क्लियर द लास्ट पॉइंट, कॉर्पोरेट साइड वाला? यस मैम। मैम जैसे जो बीकॉम वगैरह के स्टूडेंट्स हैं उनको आप कॉर्पोरेट विजिट भी कराते हैं, या आप भी जैसे कहीं पे किसी इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करते हैं या रहते हैं, वहां पर प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, तो उसके भी यहाँ पर सारे मार्क्स रहते हैं मैम। ओके मैम, थैंक यू। मैम प्लीज कोई लिंक शेयर करेंगे आप इसका, जहाँ पर ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है? कौन सी मैम? जो अभी मैम ये सारा यूजीसी की गाइडलाइन जो है हमारा, उसी से लिया है मैंने। अच्छा, ओके, थैंक यू। ओके मैम। Thank you so much, ma'am, for your insight of that API score, and surely we will be now able to calculate our API score in a proper manner. So thank you so much, ma'am, for this session. One announcement that we will be dealing with all the QA rounds after the completion of 3 sessions. So at last, those participants who are interested, they can ask after all the sessions when they are completed. Now it's the time to move ahead with our second session expert, Dr. Deepak Agrawal. Brief introduction of our today's session expert. Dr. Deepak Agrawal is a principal at reputed college. He has initially started his career as an assistant finance manager in a public limited company. He is having 7 years of corporate and 20 years of teaching experience. Dr. Agrawal has completed his PhD in management as finance specialization, master's in commerce and management, followed by PGD-FM from AIIMS, Chennai, and PGD-HRM from IGNOU. Dr. Deepak Agrawal has published 29 research papers in national and international journals, followed by 15 papers presented in national and international conferences. Dr. Deepak Agrawal has been awarded as a Best Student Award for Diploma in Business Management by Agresen Social Group Indore in the year 1994. He has been felicitated by PSG in PIMR International Conference. He is the executive member RFI Indore chapter, President RFI Telangana State, and a member Circular Economy Club that is Boston, US. He is also a member of IF. Now, I would like to invite Dr. Deepak Agrawal sir to kindly continue with the session on the topic that able to assessment criteria and methodology for academic and research. Dr. Deepak Agrawal sir. Thank you so much, ma'am. Thank you, first of all, RFI, all its team members, all senior dignitaries, Vice Chancellor, Symbiosis University, and all the senior persons once again, and my distinguished guest. So
It's a pleasure once again to carry. I'm carrying over with where the Madam Seema ma'am has left over, and the topic that I'm going to cover, that is the methodology for the university and college teachers for calculating academic and research score. You know that I hope the screen is viewable to everybody. My Yes, sir. paper is viewable. Okay, thank you so much, sir. Nowadays, the importance of getting the paper published is very, very must. Everybody is running here and there. That's where we should get the paper published, a paper with a high impact factor, or the paper to get published with the UGC approved journal or a simple peer reviewed journal. Lots of confusions are coming to each and every person. But it is not like that. Ki all papers must be get it approved and get published in the UGC based journals. Some of the times there are certain limitations. Initially, it may not be possible for the starters or the amateurs because the level of the UGC based journals is very, very high. Initially, if the paper gets rejected, it may demoralize or demotivate the person. So my suggestion, in case if it is like that, you can always start with a peer review journal. In the case of UGC guidelines, there is a weightage for it, there is a score for it. Yes, I would like to add upon कि we will go through the academic score, okay, but besides that, whatever how many soever number of papers you have got published, once you are applying for it, so they will just like Seema ma'am she talked upon, okay, they will ask to select 5 best papers of your choice, and they will ask to tick it on, and through that they will assign 10 marks to you. So once if you have been called for the interview, so the questions will be asked on those selected papers by yourself. But besides that, we need to go through the complete score, how to calculate the research score, particularly in this segment. Now, as per UGC guidelines, 2016 or maybe you can go ahead with 2018, there is no much difference in it. 2018 is the revised guidelines, which has been still followed by the UGC and recommended by the UGC. Madam has rightly said that most of the institutes are still following the 2010 to 2016 guidelines. So just before applying, you just go through thoroughly what are their standards and what are the criteria they have been looking for. Now, as per UGC guidelines, Appendix 2 and Table 2, which is related with the research, they have classified into 6 broad categories. That is the research papers published in the peer-reviewed or the UGC listed journals. There is a separate score. Publications other than research papers, that is in the form of books, translation works, maybe in the Indian or any other foreign languages. Point number 3, that is the content and development. Point number 4, related with point A, research. That means ki you have guided your PhD in the form of PhD work, maybe MPhil and other things. Your completed projects and your ongoing projects. So there are separate score assigned for it. Point number 5, it includes if you have developed any patents, you have developed any policy documents, and the awards and fellowships you have been assigned. And point number 6 includes the invited lectures or the publications, present paper presentations in the conferences. So this is the broad description assigned by it. I'm just resharing another screen. Just please bear for a moment. So this guidance is again defined by the UGC. You can even go through the site, and if required, we can send you the PDF, which can be easily downloaded from the UGC website too. So this is how they have defined the methodology. Now, whatsoever you are going to claim, for that the documentation is mandate. If you have published your paper, the certificate is required or the link is been required. If you have been awarded with any certificate, then you need to carry a copy of the certificate for it. If you have been awarded, if you have been awarded as a guide for the PhD or the MPhil work, again you should have a letter for that awards.
So this is how we will proceed. The first part deals very clearly with the research papers published in the peer-reviewed or UGC listed journals. So UGC, once we are talking about the NAC, my fellow colleague, Dr. Rupesh Shukla sir is going to discuss more on it. There are some again differences in the UGC requirement and the NAC requirement. But here, once again, if even you are having a peer review, you are getting a weightage for it. They have recommended 10, but we will go in little bit depth about it just after I'm covering all the points. So this is the format you should prepare for your publications. There should be the title with the page number. My recommendation, if it is UGC approved, so please mention the UGC approval number. You can check it through the website. Again, I can share the link or we can see the link online. So please check it out. Next thing, it may be possible the paper, once you got published, at that time it was in the list of the UGC, but later it might have been removed from it. So the committee may inquire you if presently this paper or this journal doesn't come under the UGC list, so we will not give the weightage for it. In that case, you can say, you can request that at the time of publication, it was a part of the UGC list, hence it has been, we have used it and the score we have claimed for it. So title, page number, if it has been UGC approved, please positively mention the UGC number. Name of the journal should be in the complete format, the ISSN number, the year of publication. Then you should mention clearly whether peer reviewed or not, and if it carries any impact factor. If it is peer reviewed, yes or no, and in case if it is carrying impact factor, after that you can show the what is impact factor. Again, the impact factor normally has been presented in the paper, or otherwise you can just download from the website of that journal. The number of co-authors. There is a separate weightage for the number of authors. Like you may be the sole author, if yes, number of co-authors 1, 2, 3 and so on. They ask in the next column whether are you the main author. If yes, the weightage is different, and if no, the weightage is different. And finally, whatsoever the API score comes for this particular paper will be noted over here. So this is the self-assessment form. Now, how to claim the marks for the research publication? So here they have provided the guidelines. The peer-reviewed or the UGC listed journal, impact factor to be determined as per the Thomson-Reuters list. So in case if paper is been published and in any referred journal without impact factor, you can claim 5 points for it. So once again, I'm just telling you, even if the paper doesn't come under the UGC listed journal, or if the paper is not carrying an impact factor, then also you can get the paper published. Only the weightage will be of 5 points. If paper published with an impact factor from between 0 to 1, you will get a base of 10 points as a single author. This all points belongs to a single author. In case of multiple authors, it will vary. In case if the impact factor lies between the 1 and 2, the score you will get that is of 15 points. Between 2 and 5, it is 20 points. And above 5 to below 10, that is 25 points. If you want to go ahead with the impact factor based journal, definitely the name and the fame is more important. But other than that, you can try some good journals with range the impact factor between 5 to 10. You will get large number of papers which comes under this category. So you can have the maximum score of 25 points. Otherwise, 2 to 5 is also good enough. Again, it varies. When we talk about the science journals, the impact factor may be much low as compared to the commerce or the management based journals. In case if the impact factor is above 10, then you can score or you can get the maximum of 30 points. So this is how you can calculate the publication details in the various journals. Always go in descending order, means the latest always must come first, and then before that and before that in the reverse chronological order. Please note it down. Now in case if there are 2 authors
who has published the paper, 70% of the total value of publication for each author. Suppose if you are in the range of 10 points, so 70% weightage will get to each author, means 7 points to be claimed by each of them. In case of more than 2 authors, 70% of the total value of publication to the first author. Means again, in case there is 1 plus 2, 3 authors are there, 70% weightage is given to the principal author. Means if you are the first author, you can claim 7 marks, 7 points in case if it is maximum 10. And 30% of the total value of publication for each of the joint authors. That means 3 points and 3 points can be claimed by the second and third authors, or maybe more than that. So this is how they have classified regarding the paper which are to be published in journals. Again, there is a different formula for the other things that we will discuss later. So this is the most important part where you can score the maximum marks under publication in the form of your research papers. The second question arises that what if the paper has been presented in any conference? Is there any marks for it? Is it same or somewhat different? So the answer is yes, there is a variation in the marking if the paper is been presented in the conferences. Moving to the second part of table 2, now that relates with the publications. Now suppose if you are the author of books, so there are different scores. In case of international publications, you can claim the score of 12 points. If any book which has been published globally, then you can claim of 12 points. And if you are the national publisher, well, if your book has been published by any national publisher, you can claim for 10 points. So any book, regional book, local book, but it has been circulated, well, the publisher has been having a national importance, you can get 10 points for it. If you wrote a chapter in edited book, one more line I would like to add. Okay, once you go for the book publication, please check it out that book must carry ISBN number. If they are carrying this number, you will get the weightage for it. And if it is not, then it will be considered as the local publication only. If you wrote any chapter in the edited book, you can claim 5 points for it. If you are the editor of the book by international publisher, you can claim 10. And in case of national publication, you can claim 8 points for it. If you have done any translation work related in Indian and any foreign languages, as a subpart, as a chapter or a research paper, you can claim 3 points. And if you have done the translation work for the whole book, you can claim 8 points for it. So this is about the publication in the books, nationally or internationally. The third point, that is the creation of ICT mandate teaching learning pedagogy and content development of the new and innovative course and curricula. Nowadays, again, university or the UGC puts a stress on content development. It is more convenient to claim in case of private universities, but somehow it may not be possible when we are talking about the affiliated universities. So in that case, if the opportunity exists and if you are the member of that pedagogy development team, you should always take the letter for it. That is most important. Otherwise, you can't claim for it. So if you have developed some innovative pedagogy, so you can claim 5 points for it. Even if you have design of a new curricula and course, the same marks has been assigned. Third, as per the UGC guidelines, presently now we can go with the online refresher program, which has been classified as a ARPIT programs. Okay, you can just go to the website of the UGC, go to the ARPIT program, ARPIT course, and that is mandatory. That program is been equivalent to 14 days refresher program, which are to be conducted, which are being conducted by the UGC based universities, approved universities. Nowadays, now this all has been shifted to the electronic format, e-platform. So if you have completed, means you have developed the program under the MOOCs category, so you will get the 4 credit. If it is belongs to 4 credit course, you can get a score of 20 marks. Means if you have developed the complete one training program
as a part of the refresher course, you can score 20 marks. Just for upgrading you, the refresher program by in the form of Arpit, which was been sent on the website last year, the same programs they have reloaded presently. But the last date for the registration was 10th December. Now, those who have not got this opportunity, they can wait for some time. Hopefully, they may extend the registration. So, in that case, you can register to it. So, 14 days, 2 refresher program is compulsory, and 1 orientation program is compulsory for your career advancement. So, this is the one of the best opportunity. Initially, you can join the program, and if you can develop the content, that is well and good. Now, MOOCs developed in 4 quadrants per module lecture, you can claim 5 marks for it. There may be 8 to 10 lectures on that particular program or the refresher course. So you can claim 5 points. And if you have conducted or organized the complete program, you can score maximum 20 points. Content writer, subject matter expert for each module, you can score 2 marks. As a course coordinator for the MOOCs, in case of 4 credit score has been assigned, so you can claim 2 marks per credit. Means for 4 credit score, you can score maximum 8 marks. So this is how the MOOCs has been helpful in improving the API score. One more thing I would like to add upon, once you are going with this API score, so at least your presence in these 3 categories is a must. Out of 6, your presence should be at least minimum 3 categories. So 1, you can go ahead with the research publication. 2nd, commonly you can go with the paper presentation. And 3rd, you can get into any of it. That is the one of the easiest way. Maybe book publication or other things. Development of e-content. There are different scores like 12, per module 5, contribution development of e-content same 2, and e-content for the complete coursework or paper or ebook, that is 10. So this is point number 3 related to the MOOCs or the development of the innovative pedagogy. Point number 4 relates with the research guidance. Now, if you have guided any PhD scholars, so you can get 10 per degree awarded and 5 marks for per thesis submitted. Like if 2 of your students have been awarded, you can claim 25 marks for it. Suppose if 1 student has submitted and not yet awarded, you can claim 5 points for it. In case of MPhil or PG dissertation, 2 per degree awarded. So in case of MPhil, the mark circulation has been less. In case of research projects, means if you have taken grants and you have completed the research project, if the grant is more than rupees 10 lakhs, and if it is the project has been completed and submitted and award and certificate received by the authority, you can claim 5 marks, 5 points. And if the project is of less than 10 lakhs, you can claim 2 points for it. Now, if the project is under approval, you can't claim anything for it. In case of consultancy, maybe private or maybe government consultancy, you can claim 3 points for it. So this is all about the research guidance. Moving to the next part, that is the development of patents. It is more in case of engineering and sciences, that is most common. So other than that, in management and other subjects also, it is possible nowadays. So if you have been awarded some international patents, you can claim 10 points for it. In case of any national patents, you can claim 7 points for it. So they further says the policy document submitted to the international body like UNESCO, etc., is been required. In that case, if it is international format, you can claim 10. In case of national, 7, and in case of state, 4 points for it. So here is the distribution of points in terms of patents. Now, other than that, if you have been awarded nationally or globally, or if you are been awarded as a fellowship, in case of international, you can claim 7 points, and in case of national, you can claim 5 points. Now, moving to the next part, invited lectures
oblique resource person, paper presentation in seminars, conference, full paper in conference proceeding, conference, seminar, conference also publish the full papers in conference proceeding, which can be counted only once. As Seema ma'am has already discussed, that you can claim only once. Now, what people do, they can get the paper published, they claim a score over there, they get their paper presented in a conference, and with the same paper they can claim over there. So you can't do it. It can be claimed only once. If your paper is been presented and published in some reputed journal, it is advisable that you claim over there and you can leave the point number 6. So you can get the better score for it. Now, in case if you have been invited as an expert or you have been presenting your paper abroad, that is globally, in that case you can claim 7 points. In case of any international conference held within the country, the maximum 5 points is for it. For national conferences or the presentations or guest lectures, invited lectures, 3 points. And if it is related with any state or the university, the 2 points can be claimed. Now, again, here is the format for it. Sorry. In case of invited lectures and chairmanship at national and international conference, if you have been privileged as a chairperson or the chairman of that conference, so here you can claim, and this is the format: title of lecture of the academic session if you have conducted, title of the conference or the seminar, which is to be organized by whom, that complete details must be published, whether it is the international or the national, and accordingly you can claim your API score. So please remember it, this will change with the years. Every year you need to update it. The B part, that is if you are been presenting the paper in the seminar or the conferences, this will be the format, more or less that is the same like the research journals. Title with page numbers, details of the conference publication, year, is it published in the form of ISBN or IASN? Once again, if it is in the form of ISSN, you claim upward as a point number 1. And even in case of ISBN published in the form of book format, then you can claim over here. Again, number of co-authors, whether you are the main author, and the API score. So this is how, these are the major 6 classification under research and publication where you can claim for it. Now, moving ahead, as per the UGC guidelines for table 2, the minimum research score required, that is 70 for the assistant professor. You can go to page number 60 as per the UGC guidelines 2018. In case of associate professor, the minimum score, research score required, that is 75. That is aside, that is this research score is the belong or the part of the overall research score or the overall score what madam has discussed. And in terms of professor / principal, the minimum research score should be of 120 points. So this is the minimum criteria for entering into the faculty levels at assistant, associate, and professor / principal level for these things. So here we will classify the score like research papers published in peer-reviewed journal. Then we have category 2, 3, 4, 5, and 6, and along with that we will have the total score. Just I have excluded the remaining points just for a learning purpose only. Now, how they have further distributed the score in case of joint projects. That is a principal investigator and co-investigator, you can claim 50 points for it. If you have completed the joint projects, you will get 50% weightage each of it. I've already discussed, if the paper has been presented as the part of edited book or proceeding, then it can be claimed only once. So you can claim any of the thing only in once, then not more than that. Even if you are the editor or the sub-editor of any research papers published in the form of book format, so you can either claim as the editor or the research editor, sub-editor, and or you can claim as the form of the public, as a resource person. For joint supervision of research students, the formula shall be 70% of the total score
for the supervisor and co-supervisor. The supervisor and co-supervisor both shall get 7 marks each. Means the total score was getting 10 points. So both will claim for 7 and 7 points. Both are benefited by or granted by 7 points. For the purpose of calculating research score for the teacher, the combined research score from the category 5B, policy document, and 6, invited lectures, research, personal paper presentation, etc., has an upper capping of 30% of the total research score of the teachers concerned. So one more thing we need to remember, that if you go with 5.5B and C, the total weightage regarding your patents and invited lectures, the total weightage should not be more than 30% of your total API score, particularly in segment 2. This is what we are discussing. Once again, I am going to reshare the screen. So this is the same thing I have included here. These are the classification you can have. These are the guidelines. You can visit the website where you can have the things. These are the points I have already discussed, that what you can, how much marks you can score. This as per the UGC guidelines. Now, besides that, this is the part related with the research publication. Now the concern is which type of papers to be published. So as per the earlier UGC guidelines, they were classified as group A, B, C, and D class generals. But as per the new guidelines, again you can check it through the website, that is as per the UGC CARE list with effect from 14/6/2019, they have classified this ABCD into 2 broad categories. That is the group 1, which has been the generals which are been qualified by the UGC CARE protocols. Means they have their own standards, and according to those standards, they will get those generals approved. The generals may get in, may move out. And group 2, that are the generals indexed in the globally recognized database. They further classified as the Web of Science. Web of Science much more related with the science, but they have sub classifications, that is art and humanities, science citation, and social sciences. So you can go with this subcategory. And second, in the group 2, you can go with the Scopus source list. So what you can do, you can just access the UGC website. For that, you need to be registered yourself. It's free of cost. Once go in the publication sectors under the teacher segment, and you just go through the ISSN number or ISBN number and try to locate that does this paper belongs or comes under this category or not. So it is quite easy to search that publication is been suitable for you or not. Besides that, the full list are easily available through the various sources, so that can be also get. This is the link where you can get the details about those publications. Now, again, I think now we are clear that should we go ahead with the publication in the form of journals or the conferences. As per the PhD guidelines, it is necessary to have 2 papers presented in the conferences also. So what is the benefit other than the parliamentary requirement or the requirement by the PhD guidelines? The presenting the paper in any national or international conferences, first of all, boost our morale. It helps to understand our work in the better manner, because normally it is assumed that we are presenting in front of the experts, so their guidelines, their suggestions will help us to improve in our paper. So it improves, besides that, it also improves our presentation and communication skills, and it's the opportunity to meet your academic personalities. This helps in improving the API we have already discussed. It is helpful in socializing in the cultural factor, developing, traveling, and many more other factors related with the conference presentations. These are some of the links or the resources from where you can access it. So this is from my side, and may I now request Rupesh Shukla sir to carry over. In case of questions and queries, we will discuss after that. Over to you, sir.
Thank you so much, sir, for your knowledgeable and informative session. And we are always blessed to listen you every time, whether it is a topic on research paper writing or on a plagiarism, and this time on API score. So thank you so much, sir. Thank It's you, a ma'am. new learning for all of us, sir. My pleasure. Now moving ahead with our next and last session of our session expert, Dr. Rupesh Shukla. Dr. Rupesh Shukla is having 20 years of work experience in academics. Presently, he is working with Cloth Market, Kanya Vanij Mahavidyalaya, Indore. Dr. Shukla is certified e-governance aware citizen by Department of IT Government of Maharashtra. He is a former member of Development Center, IIPS DAVV Indore. He has a lifetime membership of Computer Society of India. Dr. Shukla has published many ISBN books like Programming in C Language, Internet and E-commerce, Web Designing, and many more. Dr. Shukla has participated in national and international conferences. He has published and presented more than 20 research papers. He is also associated as corporate trainer in First Logic Infosystem Private Limited Indore and associate as a corporate trainer in EEEIT Solution Private Limited Indore. With this, I would like to request Dr. Rupesh Shukla for continuing our session on the topic Role of API in NAC. Dr. Rupesh Shukla, sir. Thank you so much, Ranjana ma'am. First of all, I would like to thank RFI and Chairman RFI, especially Ajay sir, who has given me the chance to talk to you all teaching fraternity. And as Sanjay sir and both Deepak sir and Seema ma'am told that the importance of API and how you can improve the API. So I would like to focus on the how API is useful for the NEC. In most of the organization, teacher thinks that why we should contribute to the organizations. They normally they increase their API and sometimes they don't provide the informations in the organization for the betterment of the organization and quality improvement of the organizations. So my personal suggestion is that if you are working with the organizations और हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें जो है कुछ न कुछ देना चाहिए, है ना. सो एपीआई जो है वही चीज है जो हम हमारा एपीआई इम्प्रूव करके एक ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी इम्प्रूवमेंट में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं. सो जो सर ने और मैडम ने आपको एपीआई के पॉइंट्स बताए, उन पॉइंट्स को हम उन सारे पॉइंट्स को हम किस तरह से नेक में यूटिलाइज कर सकते हैं या एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरह से टीचर के एपीआई को नेक के थ्रू अपने क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए यूज कर सकता है, उसके बारे में मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करूंगा. फर्स्ट एपीआई जो है यदि हम बात करें तो फर्स्ट एपीआई की शुरुआत होती है पर्सनल आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है इससे सर और मैम ने बोला है कि आप यदि पीएचडी करते हैं या आप एमफिल करते हैं या आप पीजी करते हैं या कोई डिप्लोमा कोर्स करते हैं, सो एवरी टाइम एंड एवरी ईयर कुछ न कुछ आप एक नया डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स आप कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं. उसकी हेल्प से आप अपना एपीआई स्कोर जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं. तो खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए जब आप कोई कोर्स करते हैं दैट कैन बी यूटिलाइज इन एपीआई, आप उसको एपीआई में यूज कर सकते हैं. देयर आर वेरियस पोर्टल्स आर देयर, सम ऑफ देम आर एनपीटीईएल पोर्टल्स, आर स्वयं पोर्टल्स, थ्रू दैट यू कैन अर्न द सर्टिफिकेट, various certificate courses with a minimum cost. So that would be feather in cap as a degree, as a diploma in your resume. So every year you can earn one certificate, one specialization course. Just like Sanjeev sir told that they rotate the subjects to the faculty every year. If you are teaching one subject in this semester, then you have to teach another subject. So these courses will definitely help you to improve your knowledge and improve your API scores. So every time, if you are most of the teachers who are appointed in organizations are nowadays are PhD. So apart from PhD, how you can improve the API? So you can go to these courses
and this is the part of one NAEC criteria, in which you can show the number of teachers are upgrading their knowledge every year. So that is also beneficial both for the organization as well as you personally also. Next, we will talk according to the criteria of NAEC, teaching plan, teacher's diary, classes taken and subjects taken. So every year you should maintain how many classes you have taken, what is the role of your in academic activities. So every year we make a teacher's diary, and how many classes you have taken, that is entered into the teacher's diary, how many subjects you have taken. So that will be also the part of API. और उसको आप API में जोड़ सकते हैं कि कितने आपने सब्जेक्ट्स लिए. इस पर नॉर्म्स नॉर्मली 24 पर वीक जो है क्राइटेरिया होता है, एंड दैट में वेरी फॉर प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर. So I'm normally in college, not only the college who are working on the basis of UGC norms, but the colleges who are working, their organization is private, their management is private. In those organizations, teacher has to take 24 lectures per week. So you should maintain your classes, your timetables, and how many subjects you have taken in a year. So that will be the part of API. Percentage of students undertake field projects, internship, and current year data. Suppose you are a teacher who has assigned by the organization projects, then internships. So how many teachers are assigned the field projects and internship? So you should maintain the list of students and where they worked, what is the field projects of the students, their assignments, and their data, means their marks, their attendance sheets. You should maintain this. That will be proof for you. So every year you can maintain this one. और इन बिटवीन में एक और सजेशन आपको देना चाहूंगा कि आप हर साल अपना खुद का एपीआई जो है वो फॉर्म खुद ही फिल करिए. मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में है इस तरह का परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म हम जिसको बोलते हैं. लेकिन यदि कहीं पर किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो तो आप खुद का अपना एक एपीआई स्कोर शीट बना के रखिए कि आपने कितने सब्जेक्ट्स लिए, कितने क्लासेस लिए, कितने बुक्स, कितने पेपर्स. सो एपीआई के जितने भी क्राइटेरिया उनके बेस पर आप अपना खुद का एपीआई स्कोर जो है वो मेंटेन करते रहिए. सो आपको खुद को अपना एक स्वॉक एनालिसिस करने को मिलेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आपके अपॉर्चुनिटीज क्या है, आप चैलेंजेस क्या है. सो ये सब खुद को आपको इवेल्युएट करने के लिए एक जो है वो मिलेगा. सो कुछ सालों पहले मैं भी खुद इसी तरह से एकदम लापरवाह इस तरह का था कि भाई मैं कुछ एपीआई स्कोर नहीं, लेकिन जब खुद को कुछ चीजें समझ में आई, कुछ सजग हुआ, तब ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आई, तब जाकर मेंटेन शुरू किया. सो हर साल आप अपना एपीआई स्कोर शीट, स्कोर कार्ड अपना खुद का मेंटेन करिए कि आपने क्या क्या किया है. क्राइटेरिया 1 का जो नेक का क्राइटेरियाज है, 7 क्राइटेरियाज है. फॉर योर काइंड नॉलेज आई एम शेयरिंग द क्राइटेरिया. और उन क्राइटेरियाज में जो आपका फीडबैक है, दैट इज आल्सो द इम्पोर्टेंट. इफ यू गेट appreciation from the organization, because every feedback must have analyzed and must have a action. And if your feedback is good, then as per 1.44 criteria 1, that is a matrix 1.441, so your feedback is good. यदि आपका feedback अच्छा है तो you can use that in your API. What are the student centric methods such as experimental learning, participative learning and problem solving methods, किस तरह से आप use करते हैं उसका आप रिकॉर्ड मेंटेन करिए अपनी टीचर्स डायरी में, एंड दैट कैन बी यूटिलाइज इन एपीआई आल्सो. आप उसको एपीआई में भी यूज कर सकते हैं. फिर परसेंटेज ऑफ टीचर यूजिंग आईसीटी. नॉट ओनली द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज एन इम्पॉर्टेंट. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है. इफ योर ऑर्गेनाइजेशन हैविंग एलएमएस सिस्टम, ई लर्निंग रिसोर्सेज, there are various e-learning resources in library also, so you can utilize those resources to gain the knowledge and to increase the API. क्योंकि API में यदि आपने कुछ खुद का डेवलपमेंट किया है और आपने उसको खुद का सिस्टम एक डेवलप किया है ICT इनेबल्ड, तो वो भी आप यहाँ पर शो कर सकते हैं. हर एक चीज का इसमें पॉइंट है, हर एक एक्टिविटी. जैसा सर ने बोला 360 डिग्री जो है इवेल्युएशन होता है, तो 360 डिग्री मींस ईच एंड एवरी, नॉट ओनली द रिसर्च,
आप क्या करते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन में 10 to 5 की वर्किंग है या 8:30 to 4:30 की वर्किंग है, तो ड्यूरिंग दैट आप कौन सा काम कर रहे हैं. Each and every moment of that you spend in the organization is useful, and you should record that activity. So innovation and creativity in teaching. What type of innovation you have started in your teaching and learning? For example, if you teach the students with the movie clips or cartoon movies, for example, one more example you can take as a communication skill teacher. If you want to, you can take a cartoon movies, or you can develop some cartoons. जो एनिमेशन मूवीज आप इसको बना सकते हैं, और यदि आप वो लेते हैं तो वो 2.34 में भी होता है, और इसमें आपने एक इनोवेटिव आइडिया डेवलप किया इस साल, दैट कैन बी यूज इन एपीआई ऑल्सो. आप उसको एपीआई में भी यूज कर सकते हैं. फुल टाइम टीचर, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है वेरियस कैटेगरीज ऑफ टीचर्स की उनके यहाँ होती है, जैसे गेस्ट फैकल्टी होते हैं या विजिटिंग फैकल्टी होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी होते हैं, कुछ परमानेंट टीचर्स होते हैं, कुछ गवर्नमेंट अपॉइंटेड टीचर, सेंक्शंस, बहुत सारे लिस्ट है आज की डेट में ऑर्गेनाइजेशन टीचर की. सो ओनली द फुल टाइम टीचर्स जो है उनके लिए ही ये इस तरह की चीज है. एंड अवार्ड्स की यदि हम बात करें तो अवार्ड मस्ट बी फ्रॉम अ रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन. कोई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन की हम यदि बात करें, है ना. एजुकेशन फील्ड के अंदर यदि हम अवार्ड की बात करें तो गवर्नमेंट के ओर से इस तरह के ऑर्गन जो है केवल शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो होता है वही एक मात्र, जहां तक मेरा नॉलेज है, वही एकमात्र अवार्ड है जो कि गवर्नमेंट जो है वो देती है. इसके अलावा जो यंग साइंटिस्ट अवार्ड है, दैट इज ओनली फॉर द साइंटिस्ट, जो कुछ साइंटिस्ट होते हैं उनके लिए अवार्ड है, लेकिन एजुकेशन फील्ड के लिए इस तरह का कोई अवार्ड नहीं है. सो कोई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह के अवार्ड्स आपको दे रही है या आपके आइडियाज, आपके नॉलेज को रिकॉग्नाइज करती है, तो दैट इज काउंटेबल, वो भी काउंटेबल है. सो यदि आपका वर्क किसी एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या ब्रांड से रिकॉग्नाइज होता है तो वो आपको होता है. कुछ फेलोशिप्स होती है गवर्नमेंट की, वो आप ले सकते हैं किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए. नेशनल इंटरनेशनल लेवल फ्रॉम द गवर्नमेंट आप ये ले सकते हैं. एंड रिकॉग्नाइज बॉडी ड्यूरिंग द लास्ट 5 years, आप हर साल जो है वो ले सकते हैं. और जब आप ये लेंगे तो ये आपके एपीआई में भी काउंट होगा और ये नेक के लिए भी बेनिफिशियल होगा. अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया थ्रेड ग्रांट ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट्स, अभी यूजीसी ने 2-3 सालों से ये इस तरह के प्रोजेक्ट जो है वो बंद कर दिया है. बट यदि आप इंडस्ट्री से, कारपोरेट हाउस से, इंटरनेशनल बॉडीज से यदि इस तरह के प्रोजेक्ट्स ले लेते हैं जिसमें आपको कुछ सम ऑफ अमाउंट जो मिलता है, वो यदि आप लेते हैं तो वो आपकी एपीआई के लिए भी बेस्ट है, और वही आप 3.11 में आप नेक के लिए भी उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. क्योंकि यूजीसी ने बंद कर दिया है तो हमारे पास आईसीएसएसआर है, सीएसआईआर है, और कुछ स्टेट भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो है वो अलॉट करती है. अभी स्पेशली लास्ट सितंबर में केरला गवर्नमेंट ने एक 1.5 लाख से 50 लाख रुपीस का जो है प्रोजेक्ट्स थे डिफरेंट सेक्टर्स के लिए अलॉट किए थे, और उनके प्रोजेक्ट सेंक्शन जो था वो टीचर्स के लिए था, स्पेसिफिकली टीचर फैटर्निटी के लिए, और उसमें उन्होंने 1.5 लाख से 50 लाख रुपीस तक अलॉट किया, और उसका टाइम पीरियड 18 months to 36 months था. सो इस तरह के प्रोजेक्ट जो है उसको आपको फाइंड आउट करना होता है कि आप केवल यूजीसी के भरोसे मत रहिए. बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको देते हैं, और उसकी एक स्पेसिफिक प्रिपरेशन होती है. सो हर 2 साल में आप या हर 18 महीने में एक मिनिमम छोटा प्रोजेक्ट, माइनर प्रोजेक्ट हम जिसे कहते हैं, दैट यू कैन टेक फ्रॉम दिस बॉडी. और ऐसे ही बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी हैं जो इस तरह के वर्किंग में लेती हैं. कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सीएसआर एक्टिविटी के तहत इस तरह का देता है कि एचसीएल जो है वो कंपनी, वो भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स अलॉट करती है. उसके लिए भी आप एक बार यदि आप इस तरह का प्रोजेक्ट कर लेते हैं तो फिर आपको डेफिनेटली सेकंड टाइम में प्रॉब्लम नहीं होती है. जैसे हमारे कॉलेज में हर टीचर का एक माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट यूजीसी से अलॉटेड था, और उसकी जो 1 लाख रुपीस मिनिमम थी और मैक्सिमम 3 to 5 लाख रुपीस तक लोगों को मिला है. कोई ऐसा फैकल्टी नहीं है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जिसे यूजीसी प्रोजेक्ट नहीं मिला है. जहां तक मुझे याद कि केवल एकमात्र ऐसा है कॉलेज है जहां पर कि जो है
हर टीचर का एक यूजीसी प्रोजेक्ट है, इंक्लूडिंग हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स ऑफिसर, इंक्लूडिंग लाइब्रेरी इंचार्ज। सो नॉर्मली टीचर्स ही इस तरह के प्रोजेक्ट्स लेने के लिए में आगे रहते हैं, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूशन में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है डॉक्टर मंगल मिश्रा सर, उन्होंने एक सबको रास्ता दिखाया और उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि वो खुद भी उन्होंने अपना प्रोजेक्ट किया। फिर उन्होंने जो है मोटिवेट किया, तो लाइब्रेरियन जो है वो भी हमारा प्रोजेक्ट उन्होंने लिया हुआ है, स्पोर्ट्स ऑफिसर है उनने भी एक प्रोजेक्ट लिया है। बट ये प्रोजेक्ट्स की जो है कि आप हर 2 साल में या 36 मंथ में ऑनगोइंग भी है तो वो कंटिन्यू रहेगा आपके एपीआई में, और पर हर साल आपको लेना होगा, तब जाकर आपका एपीआई जो है वो मजबूत होता जाएगा, पावरफुल होगा। फिर यदि आप रिसर्च गाइड एक बार होते हैं तो कितने आपके हर साल रिसर्च जो है स्टूडेंट्स हैं आपको अलॉट होते हैं, that is also the part of API and NAEC also. Number of research projects per teacher funded by the government, NGOs, कितने projects, total number of projects है ना। तो ये यदि आपके कलीग्स हैं उनके प्रोजेक्ट्स इस तरह से जुड़ते जाते हैं तो NAEC के अंदर इसका बेनिफिट होता है और हर एक इंडिविजुअल को भी होता है। कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जहां पर की डिपार्टमेंट में कॉम्पिटिशन्स होती है कि किस डिपार्टमेंट के पास कितने प्रोजेक्ट्स हैं, है ना। ऐसे बहुत सारी प्राइवेट और यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं, वहां इस तरह की कंपटीशन होती है कि किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के पास कितने ज्यादा रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं। तो हर एक टीचर इस पर्टिकुलर चीज के लिए मोटिवेट होता है, वो रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए काम करता है और रिसर्च प्रोजेक्ट का सोशल कंट्रीब्यूशन मस्ट है। सो आप इस तरह के प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं जो सोशल कंट्रीब्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर नंबर ऑफ वर्कशॉप सेमिनार कंडक्टेड ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर अदर देन, ये यहाँ पर केवल स्पेसिफिक आईपीआर है, आप खुद ने कितने अटेंड किए हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, कैटेगरीज है। खुद ने कितने अटेंड किए हैं, खुद ने कितने ऑर्गेनाइज किए हैं, किसी दूसरे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाकर और आपने क्या पार्टिसिपेशन किया है उनमें, एवरीथिंग इज काउंटेबल, हर चीज काउंटेबल है कि आप उस पर्टिकुलर वर्कशॉप कोई स्पेसिफिक आईपीआर के लिए जरूरी है। आईपीआर अब बहुत जरूरी हो गया हम लोगों के लिए भी, क्योंकि अभी सर ने मैम ने बोला था कि भाई आप जो है कॉपीराइट या पेटेंट जो लेते हैं वो दैट इज अ पार्ट ऑफ एपीआई। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एपीआई जो है वो एपीआई में कॉपीराइट जो है वो कितनी छोटी सी चीज के लिए भी लिया जा सकता है। सो हम बहुत सारे लोग इस चीज के लिए अवेयर नहीं है। यदि आप एक स्पेसिफिक तरीके से अपना टीचिंग प्लान बनाते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में बोला था कि टीचिंग प्लान बनाना भी एक तरह से आर्ट है, और यदि कोई स्पेसिफिक वे में आप टीचिंग प्लान बनाते हैं जिससे कि आपके स्टूडेंट्स और आपको और आपके डिपार्टमेंट को बेनिफिट होता है कि भाई आपका प्रेजेंटेशन, आपका स्टाइल ऑफ टीचिंग जो है वो अच्छी हो जाती है, तो वो जो टीचिंग प्लान है वो भी कॉपीराइट किया जा सकता है। और ये कॉपीराइट है लोगों के पास कि अलग अलग तरीके से लोगों ने अपने अपने टीचिंग प्लान जो है बनाए हुए हैं और उनको कॉपीराइट कर लिया है। कॉपीराइट लेने के लिए कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं लगती है, बहुत मिनिमम कॉस्ट है 500 रुपीज, लगभग इससे ज्यादा नहीं होगी, तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। पेटेंट जो है वो, पेटेंट का एक और चीज है कि पेटेंट लेना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, पर आप अपने फील्ड के लोगों को पहले फाइंड आउट करिए और उनसे कोलैबोरेशन करिए आपस में, और ग्रुप ऑफ पर्सन कैन टेक द पेटेंट ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक और पर्टिकुलर वर्क। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप बहुत सारे लोग मिलकर भी एक पर्टिकुलर चीज के लिए, एक ऑब्जेक्ट के लिए, एक टॉपिक के लिए एक पेटेंट एक्वायर कर सकते हैं। तो कॉपीराइट और पेटेंट लेना जो है वो डिफिकल्ट टास्क नहीं है। एक बार यदि आपको शौक लग जाएगा पेटेंट कॉपीराइट लेने का, तो फिर आपको नए नए आइडिया आते रहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि आप टीचिंग प्लान का भी एक कॉपीराइट ले सकते हैं। सो दिस इज, अब टीचिंग प्लान तो हम हर साल बनाते हैं, हाउ एनीवन कैन टेक इट्स पे कॉपीराइट, बट दैट इज द डिफरेंस। आपके जो कंटेंट होंगे और उसके कंटेंट में कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस होगा, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरह का जो अलॉट करती है कॉपीराइट, तो उसमें कोई शक नहीं है और कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए कि भाई आपको पेटेंट नहीं मिलेगा, तो सॉरी कॉपीराइट नहीं मिलेगा, तो आप कॉपीराइट ले सकते हैं। सिमिलरली आप ढूंढिए लोगों को जो आपके एरिया के हैं, उनसे आप कोलैबोरेशन करिए और कोलैबोरेशन के मदद से आप जो है वो पेटेंट भी ले सकते हैं। So I am giving some ideas to improve the API also. So सारे जो एक्सपर्ट है हमारे, अग्रवाल सर, दीपक सर एंड सीमा मैम,
इन्होंने अपना जो है बेस्ट आइडिया दिए हैं आपको कि आपके एपीआई में ये होना चाहिए, पर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरह से करके और अपने एपीआई को इम्प्रूव कर सकते हैं और किस तरह से आप इन चीजों को, ये जो पॉइंट्स लिखे हैं 2.3.2, यदि आप इसमें कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, कुछ भी आप पर्सनली करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से करते हैं, सो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी क्वालिटी इंप्रूवमेंट में आपका योगदान होगा, आपका पार्टिसिपेशन होगा, and definitely that will improve your API also. So next जो है वो the institution provide the incentives. ये बहुत बड़ी पॉइंट है जो कि कई बार ऑर्गेनाइजेशन जो है आपको रिकॉग्नाइज नहीं करता, बट यदि आपको रिकॉग्नाइज करता है तो आपके अवार्ड्स को रिकॉग्नाइज कर रहा है और उसके लिए आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं। तो दोनों चीजें आपके एपीआई में इंक्लूड है कि यू आर गेटिंग इंसेंटिव्स एंड यू हैव रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द नेशनल एंड इंटरनेशनल बॉडीज फॉर द अवार्ड्स। The number of PhD awarded per teacher, आपके एपीआई में भी हर साल यदि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो अवार्ड होते हैं या रजिस्टर्ड होते हैं, दोनों काउंटेबल है। नंबर ऑफ रिसर्च पेपर पर टीचर, ये एक बहुत डिफिकल्ट जो है, सर ने इसके ऊपर बहुत सारी चीजें फोकस करी है। मैं केवल एक छोटी सी चीज आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि नेक में यदि आप अपना पेपर फाइनल सेंड कर रहे हैं नेक के का वर्क के लिए, तो आप पहली चीज तो ये ध्यान रखिए कि एक पेपर, वो नेक हो चाहे कोई और हो, कहीं और ऑर्गेनाइजेशन हो, एक पेपर एक ही बार आप जो है वो सबमिट कर सकते हैं। वन पेपर कैन नॉट बी सबमिटेड फॉर कॉन्फ्रेंस एंड यदि आपका पेपर आपने कॉन्फ्रेंस में भी डाल दिया है, आपने उसको सेमिनार में भी डाल दिया है, उसको आप वर्कशॉप में भी ट्रेनिंग के दौरान आपने उसको पब्लिश कर दिया है और जर्नल में भी आप फॉरवर्ड कर दिए हैं, तो ये एक तरह से फ्रॉड होगा और एक तरह से अच्छी बात नहीं है, माल प्रैक्टिस हम इसको बोल सकते हैं। सो एक एडवाइस मेरी आपकी है कि यदि आप एक पेपर एक जगह यूज कर रहे हैं तो उसको आप किसी दूसरी जगह यूज मत करिए। अभी थोड़े दिनों पहले तक एक टीचर है वो ब्लैक लिस्टेड हुए हैं इसी कारण से, क्योंकि उन्होंने अपना पेपर कॉन्फ्रेंस में भी दिया और उसको जर्नल में भी पब्लिश कर दिया। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, उसको आप अवॉइड कीजिए। और दूसरा जो आपका रिसर्च पेपर है वो नेक के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यूजीसी जर्नल जो है, यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल, उसी में पब्लिश होना चाहिए, क्योंकि अदर देन यूजीसी लिस्टेड जर्नल है वो डीवीवी टीम जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। तो इसलिए जरूरी है कि आपका पेपर जो है वो नेक में यदि आप सबमिट करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको जरूर वो पेपर जो है कम से कम यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल में होना चाहिए। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल की, कि यूजीसी लिस्टेड जर्नल जो होते हैं उनमें हर क्वार्टर में कुछ जर्नल्स बाहर हो रहे हैं, कुछ अंदर हो रहे हैं, है ना। यूजीसी की पॉलिसी जो है यूजीसी केयर की, वो एक बहुत डिफिकल्ट पॉलिसी है और क्वालिटेटिव पेपर आपसे एक्सपेक्ट करती है। तो क्वालिटेटिव पेपर्स लिखना, जो जैसा सर ने बोला कि इनिशियली आप आईपीआर में डाल दीजिए, पीयर रिव्यूड में, दैट्स गुड, क्योंकि आपका एपीआई सुधरेगा। बट यदि आप अपने पेपर को कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं और कॉलेज यदि आपको फंड प्रोवाइड करता है, जैसे हमारा कॉलेज हमको एक अमाउंट है, फिक्स्ड अमाउंट ईयर के लिए प्रोवाइड करता है, और उस अमाउंट में हम यूजीसी लिस्टेड जर्नल में यदि पेपर पब्लिश है तो ही हमें वो पैसा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस है जो आपको इस तरह के पेपर पब्लिकेशन के लिए यदि पैसा दे रहे हैं, तो आप उसको यूजीसी के लिस्टेड जर्नल में पब्लिश कराइए और उनकी लिंक मेंटेन करिए, क्योंकि जब वो पेपर, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जर्नल जो है वो चला जाता है लिस्ट में से, बट यदि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के वो लिस्ट में था तो आपका पेपर वैलिड होगा। उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद यदि आप उस पेपर को उस जर्नल में पब्लिश करते हैं या उसके पहले करते हैं तो वो नेक के हिसाब से वैलिड नहीं होगा, बट यदि वो पीयर रिव्यूड था या पीयर रिव्यूड है तो फिर वो आपका पेपर जो है वो एपीआई में इंक्लूड किया जा सकता है। बट नेक के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजीसी लिस्टेड जर्नल में ही पेपर पब्लिश होना चाहिए और वही एप्लीकेबल है यहाँ पर। डीवीवी टीम उनको रिजेक्ट कर देती है और ये आपको ध्यान रखना है। देन हर साल कितने पेपर हम पब्लिश करें, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। 5, 10, 20 इतना नहीं, मिनिमम 5 पेपर्स यदि आप पब्लिश करते हैं तो आप मैक्सिमम 10 मार्क्स, जैसा सर ने बताया, आपको मिलता है। तो आप अच्छी क्वालिटी के पेपर लिखिए पर कम लिखिए। तो पेपर जो है रिसर्च पेपर आपको रूटीन में किसी पर्टिकुलर आपका जो एरिया है उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर फोकस होकर आपको लिखना है। देन बुक्स,
अब बुक्स का क्राइटेरिया अलग है, जैसा सर ने बोला आईएसबीएन नंबर भी है तो वो एपीआई में मान्य होगी और नेक में भी मान्य होगी है। लेकिन बुक्स जो है वो कई जगह नेशनल इंटरनेशनल पब्लिशर्स जो हैं वो यदि पब्लिश करते हैं तो ही उनकी रेपुटेशन होती है। यहाँ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि यदि वो आईएसबीएन नंबर है आपके बुक के साथ तो नेक भी उसको वैलिड मानता है और आपके एपीआई में भी वो वैलिड है। कई यूनिवर्सिटीज जो है वो इंटरनेशनल पब्लिशर्स हो या नेशनल में भी रेपुटेटेड पब्लिशर हो तो ही वो उसको एक्सेप्ट करती है। तो दैट देयर पर्सनल मैटर, ये उन ऑर्गेनाइजेशन का एक या यूनिवर्सिटी का पर्सनल मैटर होता है, बट एज पर एपीआई एंड नेक पॉइंट ऑफ व्यू बोथ आर अलाउ है, लेकिन आईएसबीएन नंबर मस्ट होना चाहिए। अब बुक को लिखना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, तो उसमें आप कहीं भी पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। अभी ऑल ओवर इंडिया में से बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं जिसके मेंबर बनकर और आप उनमें रोज कुछ न कुछ बुक्स के बारे में इंफॉर्मेशन आती है और उनमें होता है कि आप कम से कम आपको 6 महीने 5 महीने का टॉपिक देता है, उसमें आप चैप्टर भी लिख सकते हैं, आप नंबर ऑफ चैप्टर भी लिख सकते हैं और आप उन बुक्स के एडिटेड वॉल्यूम्स का एक पार्ट भी हो सकते हैं। तो यदि आप कंप्लीट बुक नहीं लिख पा रहे हैं तो आप उनका लिखिए, उसमें बहुत अच्छे अच्छे पब्लिशर्स होते हैं, जैसे ओरेली पब्लिकेशन जो है वन ऑफ द फेमस इंटरनेशनल पब्लिकेशन, उसकी बुक्स जो निकलती है उसके बुक्स के भी चैप्टर से जो है आप लिख सकते हैं। तो चैप्टर लिखना आसान होता है एज कम्पेयर टू कंप्लीट बुक। सो स्टार्ट फ्रॉम दैट, उसको पहले आप वहां से शुरू करिए और हर साल आप 1 या 2 बुक के अंदर अपना पार्टिसिपेशन करिए। So number of linkage, faculty exchange, student exchange, internship, field trip, on job training, हर जगह आप इन सब चीजों में यदि आप अपना पार्टिसिपेशन करते हैं तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे एक बहुत अच्छी नेक में एक और बेनिफिट आपको यहाँ पर रिसर्च जो है उसको बोलता हूँ, यदि आप स्टूडेंट बेस्ड रिसर्च होती है, मतलब आपका स्टूडेंट जो है आपके अंडर में जो पढ़ रहे हैं वो स्टूडेंट यदि रिसर्च वर्क करते हैं तो वो बहुत अप्रिशिएशन की बात होती है उस चीज की। जैसे मैं मेरा छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं एक विजिटिंग फैकल्टी के रूप में आईएमएस और आईआईपीएस में पढ़ा था। आईएमएस में हर साल 2 या 3 स्टूडेंट मुझे ऐसे मिलते हैं जो मेरे साथ काम करते हैं और वो रिसर्च वर्क में काम करते हैं। उनका रिसर्च जो है वो पब्लिश होता है, वो रिसर्च पब्लिश करवाते हैं मेरे नाम के साथ और उनके खुद के पर्सनली भी खुद का अलग से सेपरेट, जब 2 या 3 पेपर होते हैं तो वो खुद अपना पेपर पब्लिश करना शुरू कर देते हैं और फाइनल ईयर तक आते आते हैं, बीबीए फाइनल ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, बीबीए फाइनल ईयर तक आते आते वो खुद अपना पेपर पब्लिश कर लेते हैं। जब वो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उनको वहां पर उसका वेटेज बहुत अच्छा मिलता है और बहुत अप्रिसिएशन मिलता है और उनका सिलेक्शन कंफर्म हो जाता है। तो ये एक स्टूडेंट के लिए भी आपका एक योगदान हो सकता है कि आप स्टूडेंट्स को रिसर्च एक्टिविटी में जो है वो करिए और जो आप वर्क कर रहे हैं उसी वर्क के ऊपर भी आप जो है रिसर्च पेपर जो है लिख सकते हैं, उस रिसर्च पेपर को पब्लिश कर सकते हैं। सर मेरा पहले मेरा फील्ड जो है वो आईटी है, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, और मैंने खुद ने 3 पीजी किए हैं। एमसीएम किया, देन एमएससी कंप्यूटर साइंस किया, देन एमटेक सीएससी किया और देन मैंने ई गवर्नेंस में पीएचडी भी किया। सो इसके साथ साथ मेरा जो इंटरेस्ट है वो नेक के अंदर है। जब नेक के अंदर मेरा इंटरेस्ट हुआ तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस फील्ड के लिए भी रिसर्च, तो मैंने नेक से रिलेटेड रिसर्च पेपर लिखना शुरू किया। तो 3 से करीब 5 रिसर्च पेपर मैं लिख चुका हूँ नेक से रिलेटेड और वो पब्लिश भी हुए। तो कुछ पीयर रिव्यूड में है, कुछ जो है वो यूजीसी केयर में है, एक यूजीसी केयर में है और एक यूजीसी लिस्टेड जर्नल में। तो आप जब भी कोई पर्टिकुलर अपना एरिया फिक्स करेंगे तो आप उनको उस पर्टिकुलर एरिया के लिए डेडिकेटेड होइए और अपने पेपर्स को उसी एरिया में पब्लिश कराइए। स्टूडेंट का भी सपोर्ट आप ले सकते हैं, स्टूडेंट के सपोर्ट के साथ आप पेपर लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अच्छा आपके लिए होगा और आपका एपीआई और कॉलेज के लिए जो नेक का पार्टिसिपेशन है वो भी बढ़ जाएगा। 360 डिग्री का मतलब यही है कि केवल पढ़ाना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, नॉट ओनली द टीचिंग, यू हैव टू इन्वॉल्व इन ईच एंड एवरी एक्टिविटी। इंस्टीट्यूट की हर एक्टिविटी में आपको इन्वॉल्वमेंट आपका होना ही चाहिए। आप एक पर्टिकुलर ग्रुप के लीडर हो सकते हैं, आप एक पर्टिकुलर ग्रुप को फील्ड ट्रिप पे ले जा सकते हैं, आपके साथ जो है 10, 20, 15 स्टूडेंट जो है वो अंडर में है और आप उनको ओजेटी पे भेजिए
और ओजेटी पे आने के बाद उनसे रिपोर्ट राइटिंग कराइए और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाइए और उसके बेनिफिट्स दिखाइए। उसके बाद आप देखिए कि आप अपने आप को भी एक थोड़ा सा जो है अच्छा महसूस करेंगे और स्टूडेंट्स भी आपके बीच में भी आप पॉपुलर होंगे, तो आपका अपने आप फीडबैक जो है इम्प्रूव हो जाएगा। LMS ICT इनेबल फैसिलिटीज, नॉट ओनली द पावर पॉइंट, केवल पावर पॉइंट ही इस तरह की फैसिलिटी नहीं है जो कि आप इसमें यूज कर सकते हैं। देयर आर वेरियस ई कंटेंट फैसिलिटीज। आप खुद पॉडकास्ट बना सकते हैं। पॉडकास्ट जो होते हैं बेसिकली वीडियोज होते हैं, सॉरी ऑडियो होते हैं। बच्चा आपके पॉडकास्ट को कहीं पर भी सुन सकता है, कहीं पर भी किसी भी समय सुन सकता है। आप अपने वीडियो बना लीजिए छोटे छोटे से किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, उनको आप यूट्यूब पर लिंक कर दीजिए। अपने कॉलेज या इंस्टीट्यूट की पोर्टल या वेबसाइट के ऊपर आप उनको अपलोड कर दीजिए। आपके आसपास या नियरेस्ट कोई जो मीडिया सेंटर हो ऑथोराइज यूनिवर्सिटी का में, उस पे कांटेक्ट करिए। वहां पर उनके पास लिस्ट ऑफ मूक्स होते हैं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के लिए जो कुछ कंटेंट्स होते हैं वो कंटेंट डेवलपमेंट के लिए वो आपको यूज कर सकते हैं। आप वहां पर जाकर अपना लेक्चर रिकॉर्ड करा सकते हैं। उसके लिए छोटी छोटी सी चीजों की जरूरत होती है कि आप सबसे पहले अपना कंटेंट्स बनाइए, क्या टॉपिक्स होंगे उसके अंदर, वीडियो बनाइए उसका, और उसके टेस्ट, उसके क्विज, असाइनमेंट्स और एग्जाम्स, ये पूरी चीजें आपको रेडी रखना होती है। तब जाकर आपका एक मूक्स का रिलेटेड हो सकता है, या आप एक ई कंटेंट्स अपना खुद का डेवलप कर सकते हैं। और कॉलेज में जो आपका कोर्स अलॉट किया उस पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड इन सब चीजों को आप अपने पोर्टल पर भी असाइन कर सकते हैं। सो नॉट ओनली द पीपीटी, हम जो बहुत सारे फैकल्टी ये सोचते हैं कि हम पीपीटी से पढ़ा रहे हैं तो दैट इज अ आईसीटी यूज ऑफ इन टीचिंग, लेकिन बियॉन्ड दैट बहुत सारी चीजें, कुछ LMS सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको आप यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को और आप खुद लाइब्रेरी का यूज करना बहुत जरूरी है ना। यूज ऑफ लाइब्रेरी इज मस्ट। मोस्ट ऑफ द टीचर के अकाउंट में कई बार कई सालों तक कोई बुक इशू ही नहीं होती है। तो भाई हमारा क्वेश्चन हमारा आंसर ये रहता है कि हम नेट पर सब चीजें मिल जाती है, हम डिजिटली हमारे पास है, तो क्यों हम लाइब्रेरी में जाएं या स्टूडेंट्स क्यों लाइब्रेरी में आए। बट जो फिजिकल बुक पढ़ने का और रीडिंग की जो फायदे हैं वो डिजिटल एनवायरनमेंट है। ऑल्दो आई एम द मेन वर्किंग विद दिस डिजिटल एनवायरनमेंट, और फिर भी मैं आपसे पर्सनली यही कहना चाहूंगा कि आप लाइब्रेरी का यूज ज्यादा से ज्यादा करिए, और डेफिनेटली वो आपको भी हेल्प करेगा और स्टूडेंट को भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट वन इज क्राइटेरिया 6 कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो होते हैं, वर्कशॉप्स कितने हो रहे हैं। अब ये बहुत सारी चीजें हैं इसमें। आप ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है, अभी देखिए आप अटल एक करके प्रोग्राम होता है AICT का, उसमें आप रजिस्टर्ड करिए अपने आप को। इससे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होती हैं जहाँ पर इस तरह के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है। RFI का पार्ट आप बन जाइए। RFI जो है हर साल बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करवाता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराता है। अभी FDP फिर से एक लॉन्च हो रही है, आप उस FDP का पार्ट बनिए, गेट द सर्टिफिकेट एंड इम्प्रूव द API, और यही पार्ट आपको वहां पर भी सपोर्ट करेगा। इसमें एक और चीज है, ये आप टीचिंग वाला ही इंक्लूड करना है हमें। जितनी भी टीचिंग फैकल्टीज हैं वो सब अलग अलग प्रोग्राम्स को जो है वो हमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो इन प्रोग्राम्स को आपको ये देखना है कि ये प्रोग्राम जो है वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, अथोराइज्ड होना चाहिए, कहीं किसी यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड हो, किसी डेवलपमेंट प्रोफेशनल डेवलपमेंट बॉडी से एसोसिएटेड हो, या रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन जैसे RFI कर रहा है, इस तरह से आप उनको उनसे साथ जुड़ सकते हैं। और अभी जो ऑनलाइन जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो रहे हैं, इन प्रोग्राम्स में बहुत मिनिमल कॉस्ट होती है, और मिनिमम कॉस्ट के साथ साथ आपको नॉलेज भी अच्छा मिलता है। घर बैठे आपके कन्वीनियंट टाइम पर ये आपको मिल जाता है। सो आप ये हर साल में 2 या 3 या 4 आप इस तरह के प्रोग्राम्स जो है अटेंड कर सकते हैं। अभी जैसे सर ने बताया कि कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो ऑनलाइन रिफ्रेशर और ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं, और शायद RFI भी इस तरह का प्रोग्राम के लिए प्लान करे। मेरा ऐसा RFI के मेंबर से रिक्वेस्ट है कि रिफ्रेशर और ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स जो होते हैं वो हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है अजय सर, यदि आप मुझे सुन रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह का प्रोग्राम ला सकते हैं। प्लानिंग में इंडिया सेशन में प्लान किया जा रहा था, इसके लिए इसकी इंफॉर्मेशन 1-2 दिन में या विदिन 3 to 4 days में बता दी जाएगी।
सर अग्रिम बधाई सर इसके लिए, क्योंकि मैं यही चाह रहा था कि हम उसको एसोसिएट करके और इस तरह का प्रोग्राम जब करेंगे तो डेफिनेटली टीचर जब 28 डेज 21 डेज फिजिकली उस सेंटर पर नहीं जा पाए तो उसको ऑनलाइन अटेंड कर ले कम से कम, तो वो एक बेनिफिशियल हमारे लिए होगा। और एक अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्सेज, शॉर्ट टर्म कोर्सेज करवा रही है, एफडीबीज करा रही है, आप उनको अटेंड कर लीजिए और उन सब प्रोग्राम्स को अटेंड करने के बाद आपका एपीआई जो है अपने आप धीरे धीरे बढ़ेगा। कुछ चीजें सोशल कल्चरल एक्टिविटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज होती हैं, उनमें आप पार्टिसिपेट करिए। बोर्ड ऑफ स्टडी के मेंबर यदि आप बन सकते हैं वहां बन जाइए। अभी बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती है, वहां रिव्यूअर्स की आपको रिक्वायरमेंट होती है, तो आप अपना एक्सपर्टाइज एज ए रिव्यूअर्स आप प्रोवाइड कीजिए। अभी लास्ट दो महीने के अंदर में 3 कॉन्फ्रेंस में रिव्यूअर अपॉइंट हुआ। जस्ट आप अपना रिज्यूम वहां भेजिए, हो सकता है रिजेक्ट हो, लेकिन एटलीस्ट ट्राई तो करिए। रिव्यूअर में कोई ज्यादा आपको मेहनत नहीं करना होगी, इजी चेयर पे आपका अकाउंट बनेगा और इजी चेयर वाले अकाउंट पर जाकर आपको पेपर अपलोड किए जाएंगे आपके अकाउंट पर। उन पेपर्स को आप जो है एज अ रिसर्च गाइड उनको उनकी स्टडी करिए और उनके कुछ पॉइंट्स होते हैं उसके बेस पर उनकी नंबरिंग कर दीजिए या अपने व्यूज लिख दीजिए, तो वो रिव्यू के रूप में जाएगा और आप एज ए रिव्यूअर हो जाएंगे और उसमें आप अपने आप को एपीआई के अंदर उसको यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर कि इस तरह का यूज किया जाता है। कई बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, आप वहां पर एज ए स्पीकर, की नोट स्पीकर, सेशन चेयर के रूप में कर सकते हैं पार्टिसिपेट। अभी रिसेंटली एक फ्लायर आया था जो इंडो अफ्रीका, जो एक ऑर्गेनाइजेशन जो इंडो अफ्रीका बेस्ड रिलेशन पे काम कर रहा है, उसकी कॉन्फ्रेंस है 2021 नवंबर में। तो फर्स्ट उनके कुछ राउंड्स है, उसमें राउंड्स क्लियर करना होते हैं वहां पर, तब जाकर आप उनके जो है वो या तो की नोट स्पीकर या सेशन चेयर या रिव्यूअर्स बन सकते हैं। तो वो आप उसमें देखिएगा, आपको वो पार्ट वहां पर भी पार्टिसिपेशन करेगा। तो केवल एक छोटा सा एरिया या कॉलेज जो है, उसके अलावा भी बहुत सारी दुनिया है जहां पर आप इस तरह से अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं और अपने एपीआई को सुधार सकते हैं। फिर मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज, गवर्निंग बॉडीज, एकेडमिक बॉडीज, खुद की कॉलेज की और अदर कॉलेजेस की आप बन सकते हैं, है ना। जैसे छोटे छोटे से एग्जाम्पल आप देखिए कि मैं खुद यदि मैं बताऊं तो मैं एक कॉलेज में जो ऑटोनोमस कॉलेज है उनका सिलेबस रिव्यू कमेटी है, उसका मेंबर हूँ। तो ज्यादा कोई ऐसा मुझे हार्ड वर्क नहीं करना होता है, बट ओनली जब सिलेबस रिव्यू की मीटिंग होती है तब जाता हूँ और बस मुझे एक लेटर मिलता है दैट मुझे एपीआई मेरा सुधर जाता है। एक ऑटोनोमस कॉलेज है, उनके एग्जाम कंट्रोल बोर्ड का जो है वो मेंबर हूँ। तो जब रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं या एग्जाम से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी होती है तो मुझे वहां पर जाना होता है, या वहां से कोई लोग आ जाता है सिग्नेचर करने के लिए, मैं एज ए पार्ट हूँ, मैं उनके सजेशन देता हूँ, वो इम्प्रूवमेंट करते हैं। जैसे या आईक्यूएससी जैसे बात करें कि मैं एज ए नेक वर्क जब करता हूँ तो मैं कई कॉलेजेस के आईक्यूएससी टीम का मेंबर हूँ, क्योंकि आईक्यूएससी टीम में एक आउटसाइडर एजुकेशनिस्ट या एजुकेशन फील्ड से जुड़ा पर्सन होना चाहिए, तो मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो ये इस तरह से आप छोटे छोटे से रोल प्ले कर कर भी अपना एपीआई जो है वो कर सकते हैं, और उसमें आपके पर्सनल रिलेशंस और आपका नॉलेज और एक्सपीरियंस बहुत काम में आएगा। यदि आप अपने नॉलेज एक्सपीरियंस को थोड़ा सा एक्सपांड करते जाएंगे तो डेफिनेटली आपको कॉलेजेस अपने यहाँ साथ एसोसिएट करेंगे। और ये पर्सनल रिलेशन की भी बात होती है कि आप पर्सनल रिलेशन आपके कैसे हैं दूसरे कॉलेज के मेंबर्स के साथ, टीचर्स के साथ, क्योंकि वही फैकल्टी एक्सचेंज वाली बात हुई है। तो वहीं पर आप अपने आप को फिट करके और इन डिफरेंट बॉडीज के मेंबर बन सकते हैं। कॉपीराइट पैटर्न्स हमने बात कर ही लिया। नेट स्लेट सेट एग्जाम्स में आप अपने स्टूडेंट्स को किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, यदि आप क्लियर हो गए तो ठीक, अदरवाइज आप उनको करिए। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स गाइडेड पर ईयर, कितने कैंडिडेट्स आपने गाइड किए। अब ये केवल पीएचडी गाइड की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर हम पीजी स्टूडेंट्स की भी बात कर रहे हैं। यदि आप पीजी स्टूडेंट्स को भी गाइड करते हैं तो दैट शुड बी रिकॉर्ड, उसका भी रिकॉर्ड आप रखिए कि आपने पीजी स्टूडेंट्स की थीसिस जो है वो एमफिल स्टूडेंट्स हो या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा स्टूडेंट्स हो, उनको आप रिकॉर्ड रखिए और उनकी थीसिस का रिकॉर्ड रखिए कि आपने इतने स्टूडेंट्स को गाइड किया, एंड दैट शुड बी वेरीफाइड बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो उसको आप वेरीफाई कर अपने पास एज ए रिकॉर्ड रख लीजिए। जैसे मैंने आपको बोला कि आप हर साल अपना एपीआई स्कोर काउंट करें, खुद ही कैलकुलेट करिए। यदि आपको
ऑर्गेनाइजेशन फोर्स नहीं करता है, आप खुद अपना एपीआई स्कोर कैलकुलेट करिए और हर साल आप अपना एपीआई को देखिए, ताकि आपको समझ में आएगा कि आप खुद अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे कि भाई मैं कहाँ पर स्टैंड करता हूँ। यदि आप पेपर सेटर है तो आप उसका प्रूफ रखिए कि आपने पेपर, आपके पास वो लेटर आया और आपने वो लेटर भेजा, दोनों का आप प्रूफ रखिए। जो रिसीप्ट कॉपी आपको वहां से मिलती है वो कॉपी रखिए, और आपको जो पेपर सेटिंग के लेटर आया वो, दैट इज ऑल्सो द बेनिफिशियल फॉर एपीआई ऑल्सो एज वेल एज नेक ऑल्सो। नेक में भी ये पॉइंट में काम आता है कि आप एज अ पेपर सेटर वर्क कर रहे हैं। टीचिंग लर्निंग इनोवेशंस में इट्स रेगुलर टू क्लास, ये आपका फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें एपीआई के उसमें फर्स्ट पार्ट में इंक्लूड होता है। ये बेसिकली आपका जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है वो इस चीज को वेरीफाई करता है। जिससे अभी संजीव सर ने बताया कि डीन है, एचओडी है, वो खुद है, इन चीजों को जो है वो देखते हैं कि भाई आप क्लास में रेगुलर हैं, आपकी पंक्चुअलिटी अच्छी है, आप रेमेडियल क्लासेस लेते हैं, आप डाउट्स क्लियरिंग सेशन कितने रखते हैं, आपके जो एक्चुअल क्लासेस है ना, उन क्लासेस के अलावा आप कितने आवर्स जो है वो टीचिंग में, अदर देन टीचिंग में करते हैं। काउंसलिंग एंड मेंटरिंग, नेक के अकॉर्डिंग एक मेंटरिंग पार्ट होता है जिसमें मेंटर मेंटी सिस्टम होता है। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं 30-40, और उनको एक टीचर जो है वो एज ए मेंटर, फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड के रूप में उनका काम करता है। तो यदि आप एज ए मेंटर वर्क कर रहे हैं और स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं उसके पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए, उसकी सोशल प्रॉब्लम्स के लिए, उसकी एकेडमिक प्रॉब्लम के लिए, हर तरह की प्रॉब्लम में आप हेल्प करते हैं, मेंटेन दैट रिकॉर्ड इन अ रजिस्टर, एक रजिस्टर बनाइए, उसमें मेंटेन करिए कि आपने उसको क्या क्या हेल्प करी। और डिफरेंट एग्जाम्स और करियर डेवलपमेंट स्कीम के लिए आप उसकी काउंसलिंग करिए, तो ये भी एक रिकॉर्ड होगा और वो रिकॉर्ड एपीआई में काउंट होगा, और इसी रिकॉर्ड को आप जो है वो एपीआई में भी यूज कर सकते हैं, नेक में भी कर सकते हैं। आप एग्जामिनेशन रिलेटेड एक्टिविटी एज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एचईआई ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्मली हम ड्यूटी तो देते ही देते हैं, सुपरविजन होता ही है, बट अदर देन सुपरविजन यदि आप कुछ और वर्क कर रहे हैं, आप जैसे किसी कॉलेज में वाइवा लेने के लिए जाते हैं, प्रोजेक्ट के लिए वाइवा लेने जा रहे हैं, या आप आंसर शीट कॉपी करते हैं तो आपको एक लेटर मिलता है, तो ऐसी सारी चीजों का आप रिकॉर्ड रखिए, एंड दैट रिकॉर्ड कैन बी यूज फॉर एपीआई एज वेल एज नेक ऑल्सो। एग्जामिनेशन जो है इंटरनल असेसमेंट के लिए आप कर रहे हैं, उसमें आपको जो है इंस्टीट्यूट असाइन करता है, तो उसमें आप देखिए कि आपका नाम यदि है उसमें, कि आप एज ए इंटरनल असेसमेंट में आपको कोई क्लास अलॉट की है, कोई सब्जेक्ट अलॉट किया है, पेपर सेटिंग अलॉट की है, तो दैट मेंटेन दैट पर्टिकुलर नोटिस। हम छोटी छोटी चीजों को कई बार अवॉइड कर देते हैं, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का है, हम इसको क्यों रखें, क्या काम का, लेकिन आप उसको भी रखिए, दैट इज ऑल्सो यूज्ड एज ए एपीआई एंड एज वेल एज फॉर द नेक ऑल्सो। नेक में भी काम आता है कि आपका योगदान जो है वो ओवरऑल पार्टिसिपेशन, 360 डिग्री पार्टिसिपेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, कि आप जो जो आपको मान लीजिए एक मिला है कि आप पढ़ा रहे हैं बीकॉम थर्ड ईयर सेक्शन ए में, और आपको बीकॉम थर्ड ईयर सेक्शन बी इंग्लिश मीडियम का पेपर सेट करने के लिए जो है हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन का लेटर है, कीप दैट लेटर विथ यू एंड यूज फॉर द एपीआई एज वेल एज नेक ऑल्सो, आप उसको यूज कर सकते हैं। दैट विल शो द पार्टिसिपेशन ऑफ द फैकल्टी इनटू द एग्जाम रिलेटेड वर्क। देन एक को करिकुलर एक्टिविटी या जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है उनके बारे में भी आप देखिए कि उनमें आपका पार्टिसिपेशन क्या है, और उसमें आप एनएसएस, एनसीसी, स्पोर्ट्स, उसमें आप किस तरह से, आप एक कॉलेज की टीम, अपनी कॉलेज की टीम के स्पोर्ट्स मैनेजर बन के जाते हैं, स्पोर्ट ऑफिसर तो जाता ही जाता है, बट स्पोर्ट्स मैनेजर बन के आप जब साथ में जाते हैं तो दैट्स योर पार्टिसिपेशन, वो भी आपका पार्टिसिपेशन है। उसका आपको एक लेटर मिलता है, उस लेटर की कॉपी रखिए, आप रिलीविंग लेटर मिलेगा आपको, ज्वाइनिंग लेटर या जो भी पर्टिकुलर प्रूफ हो वो आप ही रखिए, सो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, वो भी आपका एपीआई में एज वेल एज नेक के रूप में बेनिफिशियल होगा। सो बोलने को तो बहुत सारी चीजें हैं, है ना, उन सब चीजों को आप रिकॉर्ड के रूप में भी रखते हैं तो वो आप एपीआई के रूप में यूज कर सकते हैं, और उसका आप यूज जो है वो नेक के रूप में भी कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। Thank you so much for listening me, and again thanks to RFI, team RFI, for providing me the opportunities to talk to you all dignitaries. Thank you so much. Over to you, Ranjana ma'am. Yeah, thank you so much, sir. It was a very wonderful information which is helpful for all of us. And yes, we are
dealing with all the that programs of our college, but somehow we are not writing and we are not maintaining the record. But now onwards, we will surely maintain all the records so that it will be helpful Yes. for us in the next reading. And thank you so much, sir. Yes, NAC, yes, that will helpful in NAC accreditation also, madam, and API also. But what is your Yes, sir. participation in social, cultural, and other activities of the organization? So just keep the records, keep the notice. जो notice पे आपका नाम हो, आप उस notice को रखिए. आपका appointment हुआ, उसको आप रखिए. Relieving letters होते हैं, वो आप रखिए. तो anything, whatever you have related to you, keep that record and use for the API as well as NAC also. Yes, sir. Sure. Thank you. Yes, sir. Sir, thank you so much once again, sir. Thank you. So we have completed with all the sessions. Now we are open to a round. If any of the participants have questions, they may directly unmute themselves and can ask questions to any of the session experts. यदि कोई पार्टिसिपेट किसी को यदि कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना है बाद में भी यदि उनको कुछ क्वेरी हो तो वो info@researchfoundationofIndia.com पे मेल कर सकते हैं। तो यदि कभी भी ऐसा कुछ क्वेश्चन जनरेट हो तो निकल दो। सर एक क्वेश्चन है मेरा। Yes. एक क्वेरी सर, अगर कॉलेज के जर्नल में इफ यू आर अ चीफ एडिटर फॉर लास्ट 5 years, so can I get any marks for that, API score for that? सर एक मिनट, एक्चुअली मैं क्वेश्चन फिर सुन नहीं पाया, फिर से प्लीज रिपीट कर दीजिए। Sir, I am chief editor of my college journal for last 5 years. So, Yes, can I yes. claim for API score for that? यस मैम, आप उसको जो एडिटर, बुक एडिटर अपन या जो आपका जर्नल का एडिटर है उसके लिए आप उसको कर सकते हैं। और जैसे अभी ये वाली चीज केरला यूनिवर्सिटी में भी ये पॉइंट आया था वहां पर, तो उसमें केरला यूनिवर्सिटी ने इसको जो है अलाउ किया था। अभी थोड़े दिन पहले मेरा एक फ्रेंड है वहां पर, उन्होंने इस तरह की उनका खुद का जर्नल है, तो उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं एपीआई। सर ISSN नंबर और और नेक के लिए भी ISSN नंबर दोनों है? हाँ बिल्कुल मैडम, ISSN ISBN नंबर है। हाँ तो जी, अभी दोनों उसको है। आप एक काम और करिए उसके साथ, एक काम और कर सकते हैं कि आप उसको यूजीसी केयर के लायक बनाइए और वहां पर आप उसको भेजिए, उसमें पीयर रिव्यूड मेंबर्स जोड़ दीजिए और उसको आप जो उनका फॉर्म है उसमें सबमिट कर कर और उसको आप वहां पर भी भेज सकते हैं। सो यदि वो एलिजिबल होगा तो डेफिनेटली वहाँ ऐड हो जाएगा। पहले था सर यूजीसी केयर में, बट क्या यूनिवर्सिटी के सारे जर्नल्स निकल गए थे, इसलिए हमारा भी जर्नल निकल गया उससे। फिर से ट्राई करिए मैडम, वो हर क्वार्टर में चेंज करते हैं, है ना, हर क्वार्टर में। और अभी पुराने बहुत सारे जर्नल्स जिनको हटाया था वो वापस जुड़ रहे हैं, वो जर्नल्स वापस। तो उनके जो नॉर्म्स है वो यदि आप सेटिस्फाई करेंगे तो डेफिनेटली आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा होगा और टीचर्स के लिए भी अच्छा। ओके सर, थैंक यू। आप उसको एपीआई में इंक्लूड कर सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सर। वेलकम। सर रुपेश सर और दीपक सर, सीमा मैम, आप लोगों को जानकारी देना चाहिए सभी लोगों को, ये कार्यक्रम यूट्यूब पे और फेसबुक पे भी लाइव चल रहा है और उसमें भी काफी सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। तो उनकी भी कुछ स्टोरीज यूट्यूब पर है, फेसबुक पे भी है, तो हम वो कलेक्ट करके आप तक पहुंचाएंगे। सर ठीक है सर, उनके आंसर बिल्कुल दे देंगे। रंजना मैम। Thank you, sir. Last but not the least, I would like to request Dr. Prakashini Tiwari, ma'am, WPC President, to kindly propose the formal vote of thanks. Please, ma'am. Thank you, Ranjana ma'am. May I audible, Ranjana ma'am? Yes, ma'am, you are audible. Okay. Good evening, everyone. It's my honor to propose a vote of thanks on this occasion.
I, Dr. Prakashni Tiwari, Confident ISIC College of Professional Studies, Cat Road, Rao, on behalf of Research Foundation of India and the entire team, extend a very hearty vote of thanks. Now, I would like to thank our chief guest, Dr. Sanjay Kumar Sir, Vice Chancellor, Symbiosis University, Indore. I thank to our special guest, Dr. Suhasini Arya, ma'am, Director, KJ Mittal College, Mumbai. We are extremely grateful to our honorable speaker, Professor Dr. Seema Agrawal, ma'am, ex-HOD SJDM, Dr. Deepak Agrawal, sir, Dr. Rupesh Shukla, sir, happily accepted our invitation. Thank you so much, sir and ma'am. My sincere thanks to Dr. Saurabh Jain, sir, Chairman, RFI, Dr. Ashok Gupta, sir, Vice President, RFI, Dr. Priyadarshini Agnihotri, ma'am, North South Zone, RFI, Professor Ajay Jain, sir, Central India Board President, RFI, Dr. Manish Dubey, sir, President, MP State, RFI, Dr. Sangeeta Bharuka, ma'am, Vice President, Central India Board, Dr. Subrato De, sir, Joint Secretary, Central India Board, Dr. Sanjay Prasad, sir, MP State Coordinator, Dr. Sarita Rana, ma'am, MP State Joint Secretary, Dr. Priyanka Chawla, ma'am, Vice President, World Virtual Conference Forum, Dr. Indra Dikshit, ma'am, Indore Zone President, Professor Kuldeep Agnihotri, sir, Indore Chapter Head, Miss Priyanshi Dubey, ma'am, OI, Central India Board, Mr. Yogaraj, sir, Technical Experts, RFI, all state presidents, all chapters, all officers, and Indore RFI team members, and different states for their support and to run to program smoothly. Thank you so much. Thank you so much, everyone. Over to Sanjana, ma'am. Yes. Thank you so much, ma'am. Once again, thank you to all the session experts, chief guests, and special guests for the session. Thank you so much, all. Thank you so much, Ranjana ma'am and Priyanka Chawla ma'am, for conduct successfully this workshop from whole team of RFI. Thank you so much. And thank you all our experts, Professor Deepak sir, Seema ma'am, and all our team members, RFI. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Okay. Thank you, Ajay ji. Thank you, everyone. Roshni Arya ma'am, thank you so much. Special thanks to you. Thanks a lot. Thanks for inviting me. Thank you so much. Everyone, thanks a lot, sir. Saurabh ji, everyone. Heartily thank you, ma'am. Thank you so much, Thank you ma'am. so much. Ashok sir.